maintain focus and play just as we play in the first day and keep fighting for our family because I think everyone in the team plays for our moms or our family. 2x में बोलता है. السؤال الثالث والاخير اللاعب كان متركز على انه ايش الشيء اللي بيخليكم تقدرون انكم تاخذون الكاس بما انه زي ما احنا عارفين السنه الماضيه في البي ام دبليو اي قدرتوا برابر رتا الان هي اوف لاين فايش اللي بيخليكم حق اللاعب يقول انه اكثر شيء ودنا نسويه اننا نركز على اننا نكون مركزين في الجيم ما نحاول اننا نغير اشياء كثيره وزياده على كذا احنا كل اللعبه اللي جالسين نلعب عشان اهلنا وعشان امنا وابونا فعشان كذا ودنا برابر نركز على النقطه هذه برابر समझना मैं मेरे को समझना है पोर्चुगीज भाई एक बोल रहा है पोर्चुगीज बोल रहा है एक बोल रहा है स्पेनिश किसमें बात कर रहे हैं सिमिलर होगी फिर तो पोर्चुगीज और स्पेनिश really wish you the best of luck going into and obviously for the finals tomorrow. So good luck. And we're going to hand it back over to the desk so they can break everything down. Let's get into our first match of the day. PL को मैच खत्म हो गया अभी तो نتكلم عن المباراة الأولى اليوم 12 चल अभी भी स्टार्ट करती लाइट आ जाती وجوائز كثيرة فخلونا मजा आ जाती लियो स्टार्ट कर रहे बा. Interesting to hear Revo talk actually about Seta Texas, Sanab, whatever you want to call him. The replacement of him has worked out extremely well for their team with Mythic coming into their roster, able to fill his shoes extremely well. Obviously, we have seen. And maybe, just maybe, we'll see R7 finally pick up their first event, the first international LAN event, I should say. It would be amazing. Xperia 14, 14, yeah, 1-4, yeah, that's right. Because, of course, Revo and Carrillo are very much up there in terms of the top eliminations and stuff like that. But when it comes to as well, they're still big, heavy hitters. So there's a lot of room for this team to kind of flex out and do Panic well. Mans. Let's take a look at the format. For Panic Mans. Exactly how things go down. There are 12 teams, no more 18. We've gone down to 12. नोवा की बहुत लीड है पीएल में देखा 45 पॉइंट्स की लीड है भाई 45 पॉइंट्स. See here Claris, Vikendi, Karakin and Livik going to be in the pool. That's right. It was spicy yesterday when it came to team code बनाना साथ में खेलेंगे वाईटी पे. Playing out. Obviously, some teams I think even got caught a little bit off guard. अरे रेवे को जो ट्रांसलेट कर रहा है वो पोर्चुगीज बोल रहा है. Because ब्राजील में सब पोर्चुगीज बोलते हैं. Okay. They'll be coming in with a bit more of a fresher mind for a lot of this, being able to adapt to that, and maybe we'll see some more attempts at trying to be central as opposed to playing the edge because. The edge is dangerous on some of these maps with the circles moving how they are right now. Yeah, with the hardships we've had, it's been a little bit rough, but I'm looking forward to Vikendi, just because the one we got to see yesterday, the zone was just super north. Yeah, I'm looking song carry too, especially when it comes to potentially a castle. Paisa there's not many of us here at the desk that are looking forward to something like that. But you know, I'm bro. All right, we can see here the price. Namaste, big fan. Thank you, brother. Namaste. As you can see as well, the match reward. 4:30 को first match start होगा yes. क्या तुम्हारा भाई आज फिजियोथेरेपी करा क्या? In the match to लाल दिख रहा है extra money, but at the end of the day, at the end of tomorrow. मेरा हाथ पूरा सीधा नहीं होता पता है? अभी ये जैसे सीधा होता है. So let's actually take a look ये at जैसे सीधा होता है. ये हाथ सीधा नहीं होता. Get this और इधर मसल इतने टाइम से. I'm gonna let Claris take this away. ऐसा था ना हाथ. See $10,000 for chicken dinner. सीधा नहीं होता मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता. Look, he's actually sat down. टाइम लगेगा 2 हफ्ता लगेगा हाथ सीधा होने में. ऐसा सीधा होने में टाइम लगेगा 2 हफ्ता 2-3 See the graphics from down अभी एक्सरसाइज कर रहे भाई एक्सरसाइज कर रहे तुम्हारे भाई. Where's the graphic? Oh, there it is. Okay. It's back. You got that, of course, $10,000 per chicken dinner coming in. Thank you so much, Max. सीखने में किस में एक्सपर्ट हो जाओगे मेरा भाई. Okay, we're gonna have to talk in the green room, guys. No, for that $10,000 per chicken dinner, of course. क्या कर रहे हो फ्रेंड्स सीखने का यही टारगेट है. कोई फ्रेंड्स सिखाने वाली मिल जाए. लियो. Complicated to replicate. फ्रेंड्स सीखते first day, I think. लियो. They want only having 3 teams taking home a win. That's really. अन्ना डॉक्यूमेंट्री सुपर अन्ना थैंक यू गाइस देखे डॉक्यूमेंट्री देखे कौन देगा डॉक्यूमेंट्री. New teams get their first बताओ potentially. कौन देगा भाई डॉक्यूमेंट्री. You would hope so, right? Yeah. Especially considering how. अरे 10 पुशअप मारो impossible. A little bit abnormal was actually that. अभी वेट नहीं उठाने का भाई हाथ से. 3 minute match to me because of the fact that we had such. हाथ कब तक ठीक होगा मोस्टली क्या चल रहा है अगस्त अक्टूबर तक हो जाएगा ठीक. Yeah, we'll see. अक्टूबर तक हो At the end जाएगा. of the event, obviously we're giving money out to different players. अक्टूबर तक ठीक हो potentially जाएगा. duos as well. At the end of tomorrow, we'll have our best duo team in points. We get extra 15K added to their tally. Of course, the देखा ना डॉक्यूमेंट्री कैसा लगा going गाइस. to be going on currently over. कैसा लगा legit response दो गाइस. Over at PUBG Mobile Esports on Instagram. But legit response चाहिए गाइस. Please बताओ कैसा लगा. 20K for the best team presentation. If you missed out on those yesterday, there are a couple of them extremely legit good. response. I think in general, our talent team was pretty consistent, pretty much on the same level of who we thought was the best. Super by really heart touching. Thank you. Third, but nobody else picked Rad for third other than me. I liked the throne. Yalla Habibi. But STE and Damwon, we were big fans. I think I would for Alpha 7 me on the third position because
no one uses the pickup feature in game, so imagine using it outside the game. I was like, well, actually, this is really outlandish. भाई 3 बार देखा अरे क्या बात है मेरी You can see the points as well. We have switched. जॉर्ज बहुत मोटिवेशन मिला दिया शुक्रिया सुपर सुपर कड़क एकदम अरे क्या बात है स्ट्रगल तो है भाई स्ट्रगल तो सबका रहता है भाई सबका अपना अपना स्ट्रगल Yeah, and we saw that was Alpha 7, right? If you have those great central positions. Documentary सुबह bro, love you, keep growing. Thank you so much. Yesterday a lot of very hard shifts, right? Love you रे पिक्चर होना हमको इस पे अरे positions team could hold on to. It worked for Alpha 7, it worked for STG, it worked for आज का YouTube वीडियो देखा क्या फनी बनाया बे हाईलाइट एडिटर ने अच्छा एडिट किया आज का YouTube वीडियो आज का YouTube वीडियो देखा बहुत अच्छे से एडिट किया उसने duos tournament as well here, which रोना आ गया भाई लास्ट में देख के अरे भाई एनीमे देखते हो शिनचैन देखता हूं it's going to be difficult to do. They were doing that well when it came to Watchparty showdown outside of duos. It's fine. You know what? We'll see where they're going to stand actually currently. मेरा favorite anime song बता रहा हूं Let's get an idea where the teams do stand here overall within points of मेरा favorite anime song today. 76 points for Alpha 7, currently sitting in first place by quite a large margin. anime तो मेरा favorite है मामी शिनचैन अब भाई पुराने दिन याद आ गए मेरी फैमिली नोहारा come on baby follow the groove let's go हम तुम झूमे क्या बात फेवरेट एनिमे मैन फेवरेट कभी ये मचलता है क्या बात फेवरेट मैन ऑल टाइम सच्ची बता तुम्हारा भी फेवरेट है ना एनिमे शिनचैन और बे लेजेंड मैन इज अ लेजेंड मैन Shinchan is a legend, bro. Fucking legend. Our Team Falcons. They're really good. Under the crazy, page, though, crazy. The other teams we have remaining. Unfortunately, actually, Farad, I thought we saw they have. आपका documentary देखा भाई मजा आ गया. Maybe a little bit of a glitch in the matrix, down to 0 money at the moment. Actually, बैंगलोर फिर से कब आ रहे? Change their strategies up. We अरे did भाई have अब भी तो आगे गया. Straight for an airdrop just to get secured that first one. मेरा भी favorite है यार man. Anime Shinchan is all-time favorite. Needed for a tournament that's never been seen before. Like your strat might come into the first day and think, oh, it might work out. एनिमे नहीं है जी वो कार्टून है अरे मेरे को लगता है इसको एनिमे बोलते हैं एनिमे वाले सब गाली दे रहे होंगे ना मेरे को मन में इतना गंदा गाली दे रहे होंगे अबे आजकल मैं देख रहा हूँ पीवीआर में हैं पीवीआर में आजकल देख रहा हूँ एनिमे की मूवीज आ रही है बे पीवीआर में वो जुजुत्सु कुजुत्सु और एक वो कौन सा तो एक मूवी है यार पीवीआर में कभी शिनचैन का मूवी आएगा क्या आएगा तो देखने जाऊंगा यार पीवीआर में शिनचैन का मूवी आएगा ना तो मैं जाऊंगा तो आजकल यार कार्टून थिएटर में दिखा रहे तो शिनचैन भी तो दिखाना चाहिए यार शिनचैन इज अ गोट मैन Come on, Max, let's hear it. लेजेंड Extreme! I'm done. This is why we don't let Max talk often. Yeah. Let's take a look at our schedule. Doraemon भी लो Doraemon ठीक है यार ओके ओके Start and the end of the day. वन पीस भी आता है नारुतो भी आता है हाँ ना भाई जरा लेके आने का चाहिए ऑगी एंड द कॉकरोच शिनचैन ये सब लेके आने का भाई थिएटर में As well. On top of this, gentlemen, I'm really excited to see how the documentary is so motivating to watch. No. Yeah, man. Thank you. But for now, we're going to focus on the format of our Shinchan भी anime है, yep. event. Point to be noted. Thank you. In particular, is very interesting with what players are used. We saw it happen for. वैसे भी आजकल बॉलीवुड चल रहा नहीं तो शिनचैन लगा देंगे तो अच्छा रहेगा कंट्रोवर्शियल बात कर देगा माफ करो because 8 matches a day is a lot of matches. आजकल भाई आजकल क्या है डे 1 से फिल्म इंडस्ट्री में अपने समझ रहे हो यहाँ का पावर है साउथ पावर मैन सुपर हिट फिल्म्स पावर है भाई पावर है हॉलीवुड देखता ही नहीं था मैं तो Bollywood की बहुत कम मूवीज देखा हूँ always watching Telugu films, Kannada films, Tamil films. So, South films, man. Star Wars is looking primed and strong here to be able to take it. Only 3 matches remaining. They are scary. And they should have got potentially 2 wins, right? That first win was very. Tiger देखने कब जा रहे हो PVR में? It was like 1 win and 1 unofficial win. Sandhawk's the perfect battleground for that kind of scenario to occur. Hollywood नहीं पसंद रे. Not easy to see everybody. Hollywood में बहुत कम पिक्चर्स पसंद. जैसा कि अपना हेरा फेरी हो गया, फिर हेरा फेरी हो गया, पहले वाला गोलमाल हो गया. ना. और कौन से बहुत अच्छी फिल्म्स है बे, कॉमेडी. जो कॉमेडी एकदम टॉप मूवीज है ना वो पसंद है. बाकी सब तो यार
I blame him for anything anyway, to be perfectly honest. True. So, That's yeah. true. ये सब तो यार मजा नहीं You है. blame the shortest on the show. लियो duo That's match है right, ना. normally it's me, but this time Yeah, man, it's a duo match. He's even shorter than me. I don't know. यार फिर से यार ये लोग स्टार्टिंग में बोर That's why कराएंगे you bring वीडियो the मैच. defenses first. नहीं स्काउट जैसा कल क्लच किया आज कर देगा तो Alright. मजा आ Redeeming रहा quality. Good point. अरे चिच्चा ठंडी लग रही है जैकेट दिया रो. Big shout out to Sonic. भाई जैकेट दियो जी इसको. अरे ये कौन सा पोजीशन है रे खेलने का. Collaboration professional esports. Huh? You can see all the players currently on the stage using these भाई ठंडी लग रही दिख रहा है इसको. They're official smartphone partner here of PUBG Mobile. Also need to give a shout out here to Savvy Gaming Group. लाइगर तेलुगु में भी है. अरे बट है तो बॉलीवुड फिल्म ना All यार. of our sponsors able to make this possible. तेलुगु फिल्म थोड़ी है. तेलुगु में आ रही है तो बॉलीवुड And last फिल्म. but not least, the fan favorite player. I talked about it before. You guys just need to head over to the PUBG Mobile Esports Instagram. Close पहला और page last to give में आना likes है. and leave comments about your favorite teams. Currently, if I'm not mistaken, Scout was winning. But obviously, we'll find out when we do finish off this event. I can see over his shoulder, we got about 50 seconds until we are in the game here. We're going to be heading over to Sandhawk yet again. Gentlemen, it's going to be 7 Worlds Gaming and Avenger to walk you through अबे एक बाबू. Scout 1v2ing to win again. That shows your taste, bro. Jason, I'm actually I got happy taste, that right? happens. You know, there was a lot What's our of taste? non-believers for Scout, although you and I were the अच्छा ones. फिल्म का टेस्ट बोलो. Yeah man, I always like South movies. तेलुगु तमिल कन्नड़ा movies. But I wasn't too much of a believer. बॉलीवुड बहुत We'll कम see पसंद. what they're gonna end up doing with the duo. मेरा फिल्म का taste ही वैसा talk है. about 7Cs. South movies are the best. That duo has been playing it super, Best. super slow. All time They best. have been playing that snake role, just waiting for all the other teams to fight it out and trying to sneak their way into the zone. We saw it almost backfire yesterday with Scout just Please बताओ how to vote. into this zone and then clutching that 1v2 that we ended up. Scout का seeing. अच्छा Scout का vote बोले तो Instagram पे जाओ PUBG Mobile They're Esports. gonna continue to play और जाके that kind of strategy, just super डालो. slow, try to Scout के comment को like and करो, then just vote हो wait जाएगा. for the right time and लाइगर तेलुगु मूवी है भाई. Yeah, अरे बट really interesting to छोड़ो see, यार. interested to क्या see वो how स्टोरी वोरी it's समझ gonna में नहीं be आ रहा. ट्रेलर our पसंद नहीं आ show रहा. match for the start of But the Vijay season. Deverakonda is all-time favorite man. I'm Arjun Reddy fan. I'm Arjun Reddy fan. इसमें जरा करण जोहर भी है डायरेक्टिंग में. अनन्या पांडे भी है. समझ रहे हो जरा साउथ का कोई साई पल्लवी समंता ऐसा रहता तो देखने में मजा आता लाइगर मूवी. No hate to anyone man, but South है. समंता रहती, थोड़ा अनन्या पांडे, साई पल्लवी रहती, या कोई दूसरा रहता साउथ की एक्ट्रेस, साउथ का डायरेक्टर रहता तो मजा आता भी. क्या बोले? What about Marvel? Marvel तो इंटरनेशनल हो गया ना, अपन इंडिया की बात कर. yeah, there's going to be so much room for them to loot, to just wait and see what's going to be happening with the later circles too. तेलुगु मूवी damn favorite one. तेलुगु मूवी favorite. We're talking about बहुत सारे हैं there's bro. already a knock. Talk Even though about there's 24 OGs. players, जब मैं जहाँ से team देखना decided स्टार्ट to किया हूँ just तेलुगु मूवी, hop सबसे up पहले against मूवी बोमरिल्लू. RA Esports and movie. SG. And RA Esports, it's बोमरिल्लू, already out पोखरी, within the अपना first minute बाहुबली, yesterday. अपना Eventually, कितने it मूवी took है us रे. at least ट्रिपल 5 आर हो गया. minutes to अरे get ऐसा the लिस्ट बन जाएगा, elimination, मैं and that बनाऊंगा was तो. with the actual लिस्ट बन जाएगा, full लिस्ट. teams, 4 players. लिटरली लिस्ट. Right now, less than 1 minute, and we already. आजकल तो नाम भी याद नहीं है. इतने सारे मूवी देख लिए तेलुगु के. नाम ही याद नहीं है. इतने सारे मूवी देख लिए. SG was able to just रश्मिका पसंद गाना है. close them out. We actually get a मेरे को quite नहीं nice circle here. This is more of a rare समंता one मैन, for Senna. समंता के सामने Far कौन northern यार. one. Samantha, Mark is decent still. no competition. Paradise is decent still. So that's obviously the good start for this one. Again, a huge thank you to Sony Xperia for joining us here for Gamers 8 and PMWI being our official smartphone sponsor. On screen. एक टीम खत्म भी हो गया. अपन मूवी की बातें कर रहे थे. And I was going to हैं? mention, wow, for everybody that's currently कौन खत्म हो गया बे. मूवी की बातें कर रहे थे अपन तो. Game Esports Center with your friends. दिखा क्या स्क्रीन पे. मेरे को तो नहीं दिखा. Special sets, and don't forget the PMWI packages are on sale for a limited time, and you can also win PMWI treasure crates if you play PUBG Mobile during PMWI. फेवरेट एक्टर इन Now, बॉलीवुड. I'm looking at the stats from yesterday. नवाज भाई हमारे. And I believe अपने, this is the first time पंकज that भाई, SG is able to त्रिपाठी. get some eliminations on the board for this All time matches, favorites. so that's good to नवाज see. भाई तो See हो. right there how it happened. Silas being मनोज in भाई, the नवाज background. भाई, One of the other players from पंकज RA भाई. Esports didn't even have गॉड a रे रिप्ले बताया. अच्छा करा रे इसने on 1v2. him too. क्रेजी 1v2. Wow, okay, Silas. I appreciate that. I appreciate the aggression right off. बहुत the सारे bat. बे. बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं. QBU unscoped as well. That's kind of crazy. नवाज भाई तो All right, लेजेंड. Falcons here as well. Looting. It's obviously Yusuf and powerful. Amazing तमन्ना भी है players साउथ से. who हाँ have तमन्ना हो gone गया. so far श्रुति हसन हो गई. साई पल्लवी हो गया. समंता हो गया. अनुष्का हो गया. अनुष्का शर्मा नहीं, अनुष्का शेट्टी. Mainly Jason and और Calaris was फिर talking about it. They didn't give much talk time to बहुत Max सारे हैं. in that case. You know, cheering on Falcons and them being able to do well in our शाहरुख खान यार. मैं देखो showdown. तू ये ना शाहरुख खान Obviously here we का are in पर्सनालिटी, the way he talks, the way he
Yeah, before we carries himself, वो तो legendary है भाई, वो ज़्यादा पसंद है मुझे। शाहरुख खान यार, I'll tell you in a little bit, Rod. मैं बॉलीवुड मूवीज देखता नहीं ज़्यादा, एक्टिंग का ऐसा बोल नहीं सकता मैं, बट हाँ भाई खतरनाक है भाई, शाहरुख खान का पर्सनालिटी लेजेंड, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई, उनके इंटरव्यूज देखो भाई, crazy. For Scout and 7Cs, played that snake, played that patient role. Now, what I was going to वॉच पार्टी भी कर ले, क्या बे डुओ मैच है बे, डुओ मैच में क्या आएगा वॉच पार्टी भी। अबे पहला मैच ये लोग बोर कराते, इसके लिए टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। अब देखो मैं चुप बैठूंगा ना, अपन देखते हैं, चलो देखो 2 मिनट चुप रहता हूँ, देखो बस मैच की बात कर रहा हूँ, तुमको इतना बोर होगा ना। कल मेरा इतना माइंड फॉग हुआ ना पहले मैच के बाद ही मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया, बट चिकन मारा था वो मजा आया, बट स्टार्टिंग में पूरा मूड ऑफ हो गया, इतना स्लो। अभी चिल करो, अभी 15 मिनट तक कुछ नहीं होगा, अभी जितना फाइट होना था हो गया, अभी देखो ऐसा लेटे रहेंगे, एक बंदा अपने कंपाउंड में बैठा रहेगा, ये अपने कंपाउंड में रहेगा। पहला मैच ये लोग डुओ कराते और बोर कराते, सीधा मेन मैच कराने का। We've seen some crazy things from Star, and actually they've been super impressive throughout. KGF2 Rocky भाई, yes yeah man, it's just been insane how these guys are able to play. Yeah, KGF is all-time favorite, number 1 list में number 1 KGF. That came close to him, that shotgun in Livik is just absolutely insane. And that's the favorite actress Alia Bhatt on for today, because Livik, nope, it's so small, it's so compact, so many third parties, so many angles that you can pretty much see across a majority of the map. And once you get close, that shot is just absolutely unstoppable. And you were saying Maxman does like Star Wars esports. He also likes Damo and Kia. Favorite so cricketer in the duo, Virat I mean, Kohli. Damo and Kia hasn't really been able to do much. I think they're currently standing in the 10th place for the duo. वीकेंड का स्टार बॉय लगाओ, देखो परतू भाई को स्टार बॉय सुनने गए थे, इधर अपन वॉच पार्टी कर रहे हैं। कल भी एक बंदा आया था, बोलता ब्लाइंडिंग लाइट्स बजाओ, यही था शायद। इसके लिए अपन स्पेशली 4345 लोग में से एक बंदा माइनस करो, 4344 लोग, 4344 लोग एक बंदे के लिए ब्लाइंडिंग लाइट सुने और स्टार बॉय बजाओ कहते आज। भाई इतना है तेरे को वीकेंड का, तो जाना भाई कॉन्सर्ट में, जाना यूएस जाना भाई, कॉन्सर्ट करता है, जाओ ना भाई खर्चा करके। इधर पागल है, इधर हम वॉच पार्टी कर रहे हैं, हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम बोल रहे हो ब्लाइंडिंग लाइट्स बजाओ, तुम बोल रहे हो स्टार बॉय बजाओ। अरे वीकेंड के वीकेंड क्या भाई, ठीक है हम हमारे को भी पसंद है वीकेंड यार, बट ठीक है ऐसा ही वो टाइमिंग है, मैच चल रहा है, तुम बोल रहे हो गाना बजाओ। ऐसा हौला पेला है रे, ऐसे खर्च करो भैया, जाओ कॉन्सर्ट में, सुनो उनो मजे करो। और जिस फोन से तुम मेरी वॉच पार्टी देख रहे हो, उस फोन में यूट्यूब तो होगा, खोलो खुद का बजाओ स्पीकर पे, ब्लाइंडिंग लाइट नाचो स्टार बॉय पे, हम मदरफकिंग स्टार बॉय, नाचो मां की, तुम नाचो अलग अपना, कोई प्रॉब्लम है तुमको, कोई मना नहीं, कोई मना नहीं कर रहा। 4400 लोग तुम्हारे अकेले के लिए स्टार बॉय सुने वॉच पार्टी के बीच में, वाह मैन, क्रेजी गाय मैन, इज अ क्रेजी गाय। Kind of excited to see what PMPL Brazil is going to do here for the fall edition, and how Rise is going to be able to fare, and how much WWE player Roman Reigns dominate over Vivo Kid Stars. Yeah, with Alpha 7, I think the big question mark for me today is going to be, can Carrillo continue to perform like that, right? This is a player that usually tends to perform. अरे यार ये भाई डुओ क्यों लगाते हैं यार ये लोग पहला मैच यार, गलत बात है भाई। Mafioso was able to do yesterday, but मैं फेवरेट फुटबॉलर फुटबॉल बिल्कुल फॉलो नहीं करता, बिल्कुल भी। तुम्हारा जो फेवरेट है वो भी मेरा फेवरेट, समझ। Maybe not so much here on the duos. Yeah, I'm hoping that they're able to win it, right? But on the first match, for the actual points that are going to be counting towards the other prize pool, I'm intrigued to see how they're going to. चिल करो बे, अभी ये लोग 5 जोन पूतने लड़ेंगे। बताओ अपने घर में क्या चल रहा है तुम्हारे, क्या चल रहा है, शांति चल रहा है? अभी इधर कुछ नहीं होने वाला, 5 जोन भाई, अपने लोंडे अच्छा जोन लगे बेटे। अच्छा अगर ऑपोजिट कंपाउंड ले लेना जाके ब्रिज के वो साइड का हिल वाला शिकन में, और बताओ गाइस क्या चल रहा है अभी, चिल करो अभी, ये कुछ नहीं होने वाला इधर। अभी इधर सबके जलसा चल रहे, जलसा डुओ मैच है ना, सबको अपना अपना जोन मिल जाएगा, सब जलसा करेंगे, जलसा जोन नो वेट करवानो, जलसा करवानो कंपाउंड में बस। अभी ये लोग डुओ डांडिया खेल सकते हैं आपस में, क्योंकि आसपास कोई यही नहीं, चिल करो भाई। In our duos show match, obviously they are the only team on that west side, south of Hattin. Could potentially be taking over the bridge or. Happy Janmashtami, happy Janmashtami, happy Janmashtami. See what they do. Vampire. आप सभी को भी guys, happy Janmashtami. Main tournament winners here with WWE देखते हो नहीं रे? TH. 10th तक देखा, 10th के बाद नहीं देखा।
These guys have been impressive. Yeah, they're going to be going up, and a lot of people are going to be trying to figure out where the next circle is going to be going. रघुल प्रीत कैसी लगती है? हाँ मेरी नेबर है ना भाई. The island towards the west. अच्छी लगती है भाई. ऐसी बात है कि कैसी लगती है मतलब इंसान लगती है भाई और कैसी लगती है? कैसी बात है? ऐसी लगती है मतलब भाई. Rotation because with in Sandhawk you don't want. ऐसा बोले दादा मेरे बाजू नेबर है भाई. Not that much cover. Yes, there is a lot of grass all over the place that you can lay down and be a little bit of a snake. भाई तेरे को आता क्या साउथ लैंग्वेज? उस्ताद है ना? तेलुगु उस्ताद. आज कैसा है ब्रदर? हो रहा है रिकवर? आज तुम्हारा भाई ने फिजियोथेरेपी करा गया है. 15 दिन फिजियोथेरेपी, फिर तुम्हारे भाई का हाथ सीधा हो जाएगा. अभी ऐसा सीधा नहीं होता, बट 15-20 दिन बाद पूरा सीधा हो जाएगा. Considering they probably रिकवर होने टाइम लगेगा. Amazing synergy. Yeah, Liquid has really been a standout player for them, so that's mainly, I think. वीडियो मस्त था आपका. थैंक यू, थैंक यू. शुक्रिया, शुक्रिया. आपने कितनी स्टडी करी है? अभी तो कॉलेज चल रहा है भाई. एग्जाम लिखने गए, कंप्लीट करने गए. कब लिखूंगा मेरे को खुद को आइडिया नहीं है भाई. Next level synergy, locks. ना. Just able to take that bug in. Powerful and Yusuf man. Powerful guy. Taking too much damage. Oh, I say that, and he catches. Love you, मेरी जान. At the very end. Very inspiring story, Snax. Thank you. Oh, he nearly used it, so I would assume that he's going to use the bandages instead. Oh, he is going to use the first aid. It's going to be no first aids after that. I literally cried when you were dropped by India and you didn't have an opportunity. अरे उसके बाद यार किस्मत में जो लिखा था वो होना था brother. I got an IND man, and I'm lucky कि मैं IND join किया. किस्मत में जो लिखा रहता है वो होता है भाई. मेरा वहाँ पे नहीं जाना मेरे लिए अच्छा साबित हुआ. It's all about luck man. किस्मत में जो लिखा है. अरे क्या सनाना ना ट्रेड मैन. एक उधर नॉक, एक इधर नॉक. अरे डब्बा डाल दिया क्या? नहीं नहीं डाल पाया. Yeah, both of those teams are going to be able to recover. Loved your story, just loved it. Thank you. Hyderabad favorite actor Gulu Dada है क्या? I think we're going to continue to see it today. Those third parties, and this is actually Gulu Dada something I got a movie chance to talk to Luxy earlier during breakfast. And भाई एक बात आपके साथ खेलना है brother. खेलेंगे जरूर खेलेंगे. Faster the gameplay is, you can't really take on those fights, and if you do take on a fight, you better finish it off quick. So I think Bigatron is going to be looking to do that. But guess what? Damn Kia Fabian being really sneaky here, just waiting patiently, and he needs to be careful because Bigatron, if they hear any kind of footstep, they're just going to automatically shift towards where he's at. But right now, third party by Viper Esports. You have to make sure you cover Orient and get just 2 ton of focus. PUBG is back after this ban. He's going to say bye-bye. This is the moment I was waiting for. Let me get Kia Motors with the clutch. And while I'm at it, I'm also going to loot you. Guys, Kia Motors with the clutch. Invest for that as well. So he's going to be stacked to his teeth. 3 eliminations. कल मरफा देखा तेरा जहर बाबू. Thank you, thank you. Logging up and saying, let's go. Empire on high ground too. हीरो नानी नहीं मालूम. कैसा नहीं मालूम यार. अभी उनका रिसेंटली मूवी देखा है आंटी सुंदरानी की. हाँ मूवी भी. Super unlucky. इसको बोलते हैं मजा आ जाए. They see a player almost get a knock. They do full comedy, full love story, मजा है. Traded out as well, and then they get sneaked up. Congrats तो आज न्यू कार आई है. अरे congratulations रेडली भाई. I wonder how कौन सी कार ली है जरा बताओ. Going to stay there because they are being overlooked by Vampire. कल मॉर्निंग लाइव आओगे क्या? कल देखता हूँ रे. वीडियो आएगी तो वीडियो आ जाएगी. लाइव आ जाऊँ. उल्टा होके ट्वर्क करो. He lost a player earlier to the M1 Kia. बाप रे बाप. Powerful, and his teammates are currently all the way healed up. But as you mentioned, the make it. I wish he would have used the bandages. I was going to talk about that earlier. उल्टा होके ट्वर्क करोगे. He knew exactly where Bigatron was. He knew more than likely they didn't have a vehicle because of the way that. इंसान सीधा होके ट्वर्क कैसा करता है पहले वो बता मेरे. Being able to use those bandages. Gym updates, no gym for 3 months. Time because anyways he ended up waiting for his teammate to get there. Stressful situation for sure. He wanted to be full. भाई विक्रम देखे विक्रम देखा भैया. Start peeking, gather some of that information. Fluke. आपके लिए स्टोरी लगाया हूं. लोको मेंशन बैक दे दिया स्नैक्स में कि आज. This is us being able to just look at it. Some people when they कल मरफा देखा तेरा ATV in the desert, they think they're going to be. भाई 22 अगस्त को आ रहा है क्या स्नैक्स भाई? कहां पे आ रहा हूं भाई मैं? Yeah, all personal preference as well, like because you come in a situation where you're thinking here powerful. हैप्पी बर्थडे स्नैक्स भाई. उत्कर्ष भाई ठीक है मेरा बर्थडे तो नहीं है बट तुम बर्थडे बना रहे हो मेरा तो लाओ यार गिफ्ट दो. डालो गूगल पे 10,000 रुपए पार्टी करके आता हूं. लियो on top is on top and he finds Scout. तो अपने रोंडे को मार. Oh my god, he finds him on top भाई क्या हो गया भाई? He's able to take him down. The question is Scout going to be able to get revived of that? अरे भाई क्यों यार जाने देता भाई ब्रिज क्रॉस करने देता भाई क्या यार? That's even more. So I think he's just going to bleed on top भाई क्यों भाई ऐसा क्यों यार? And that is Deadeye's guys. अरे उसमें देते ना
taking that point for them, and 7C's couldn't be left. गलत बात है गलत बात क्या यार on top ने बहुत गलत किया this is very wrong man. Interesting there from Scout. He was gonna be trying to be sneaky there on the bridge. He ended up backfiring, but Dead Eyes take full advantage of that and then just getting an ilm to themselves. See how these teams are gonna end up rotating and how they're chicken आ रहा है वो for the best man solo chicken time कल जैसा Scout ने निकाला इस बार सारंग को निकालना पड़ेगा चल सारंग कर लेगा तू 850 के हो गए क्या बात है मजाक कर रहे हो impossible bे as we're looking at the map here you can see 846 के हुए गाइस अभी और अपने को चाहिए सब followers to worry about and this is what I was talking about earlier too how many teams Toko भैया Toko in that intersection see S2G you can see the player from Rod who's going to benefit the next circle that we are going to be getting here. Big Galaxy currently playing a really slow. This has been their pace as well. Looting in boot camp, seeing what's left, and oh, this circle's a good amount there. भाई अगर वो ब्रिज क्रॉस कर लेता ना जोन मिल जाता भाई अगर वो ब्रिज क्रॉस कर लेता जोन मिल जाता तो इंस्पायरिंग स्टोरी थैंक यू ब्रदर अरे शुक्रिया शुक्रिया भाई बैंगलोर कब आ रहे अभी आगे गया रे maybe end up with the same fortune that Scout had. Yeah, and that's really the faith in the hands of the Dead Eyes guys. Two interesting things is that we have these two compounds. They are in play, and the two high ground and the one high ground compound, one low ground compound. The one above the bridge on that southern side is really interesting and could take a lot of control. Now Ravenclaw is pushing, and top is the beetroot ka juice yaar. See a lot of teams coming in from the east here. We're just looking on and seeing right now. Nice one, Sara. He's being able to get some revenge there on what happened to his teammate earlier. Saran being able to spot at least her from Dead Eyes. Is he going to be able to spot out Joker? Oh, the grenade ends up bouncing on the top. Did he realize that? I think he did. He started backing off a little bit, and this is how action. गाड़ा है वो नीचे पूरा. अरे नहीं, बस पीले. Ravenclaw from Vampire Esports. अरे मम्मा पूरा गाड़ा है वो. I think he has been spotted. Can Saran get this nade? ये तो लिया और क्या इससे जाके. Get the ilm. They are going to be getting pushed by the zone. He is able to cause some damage, but he's not able to. Al Sarang, when we do it, he's going to be able to heal up. He just keeps going from tree to tree. Yeah, Joker just have to. When we do it. Arey! Ooh, connecting just a little bit. Salang can move. And then maybe take on Joker just a little bit later. I think it's unfortunately it for on top. He's going to be bleeding out to the blue zone in this case. Damonkia lost one player. Fabian's on the ground. Kill मिल गया सारंग को kill मिल गया. Further away. Utility could be connecting. That's a potential big one. Lost some damage. I think Carillo, yeah, Carillo's gonna go down though. And it's effectively a 1v1. Fabian's still alive. 1v1 है भाई. A7 versus Kia Motors. Oi! Just letting those finish कर दिया. Rain. I think Rio might have been able to just relay some information in regards to the footsteps that चल सारंग तैर रहा है सारंग अभी तैर रहा है. And this is going to be an interesting 1v1 here between Forrest and Rebo, who's going to take it. I know a lot of the Brazilian players carry momentum regardless whether this is a show match or not. And think of Sarvhaven, as we're saying that, guess what? Team Falcons Powerful are going to try to third party this fight. Forrest with the DBS. He's able to gets the first knock. Can he get the second knock? He needs to back off because he did end up getting a lot of उसके नेट से फूट गया बे. Powerful. लाल ना को उसके नेट से फूट गया. Too much with those nades. भाई लोग क्या DBS चलाते बे. अरे नेक्स्ट टाइम गाइस जब भी मैं BGMI खेलूंगा ना तो मेरे को याद दिलाना DBS प्रैक्टिस कर. ठीक है नेक्स्ट टाइम जब भी मैं खेलूंगा ना तो याद दिलाना DBS प्रैक्टिस कर. याद दिलाना अच्छे से याद दिलाना पहले बोल दे रहा हूं. Not connecting on Falcons. DPS in hand for Powerful. भाई पूरा जोन उधर गया रे कंपाउंड. सारंग पानी में सारंग अभी भी सर्वे कर सकता है. More information and push maybe around that rock. Revo is disengaging from that fight, so he will be moving around the northern side and just try to get a bit more serene inside the new circle that has. अभी MBBS छोड़ के गेमिंग कर दूं. अरे भाई all the best भाई आपकी जर्नी के लिए. Basically guaranteed to end right next to. And yeah, that's the huge question is how does these teams at the east side approach? The next thing is it says to G. Doing some damage towards Falcons, and they're also prioritizing getting into the circle. They realize they have to, otherwise they're not going to catch a break with that. Circle is closing in just 10 seconds. Yusuf, Powerful, has to take S2G on straight head-to-head, or push towards Rero and have maybe a better chance to sweep towards him. But the 30x, thank you, brother. Sarang
has found a decent spot to survive for some time here outside the border. Fine with that for some time. And Nigma Galaxy, they are inside this compound that are in the dead center of the zone. Fluke finds Joker, and Deadeye's guys are eliminated by. अभी तक highest earning किसकी हुई? S2G की या ना? Ultimately, he's not able to get out. Highest earning किसकी हुई guys? S2G की हुई या इनकी? A7 की किसकी हुई? Eliminating Team Falcons while they're at it too. And you were talking about Nigma Galaxy. They are already positioned within that compound as Silas does end up getting knocked by Revo. Revo with the big rotation earlier, deciding to back off. That ultimately ended up paying off in a big way. And he might be able to get some illings. And guess what, Calcy, can you get out of this? You are going to have Revo looking at you. Can Revo connect? This is going to be a big question right now. He can connect. Revo on a tear right now. 3 A7 होगा. सबसे ज़्यादा A7 पैसा कमाया. Better. Yeah, just better. He's got the Brazilian side. Aspect Plus नया documentary देखने के बाद. अरे thank you brother. Probably could. A7 $40,000 जीते. ऊपर. Yes, they go out. $40,000. 4 teams are able to get that 5th place elimination, getting 3 points. 25 लाख रुपए कमा लिए. In a pretty decent spot. 32 lakh rupees. The next circle has popped top right of the minimap. एक दिन में. Actually slightly inside. That means Nigma एक दिन में 32 लाख रुपए कमाता है भाई. Lord, and that's a huge opening. That is the go sign for them. They have to send this in, and they could finish off that potential elimination. That's exactly what. ये क्या तरीका है यार? अबे इन लोगों का कैसे टाइम पे बफर करता है? GG, good night. I think they are going to end up losing Lord. 2x कर दे. Be careful because now there's going to be 2 players from Vampire Esports. Ravenclaw does end up getting some damage. Rose in hand. Fluke. Here come the nades. Is Emoti going to be able to hear where Fluke is? That's a great nade right there. It makes him back off. He does end up half damage. Ravenclaw able to heal up. Emoti just backing off, and while everything is going अगर आपको 30 FPS के मोबाइल से टूर्नामेंट खेलने को पड़े और बाकी के पास आईफोन हो तो क्या करोगे? हम ये करेंगे. हम खेलेंगे. फिर तो हम वही खेलते इधर तक आए. हम Redmi Note 4 से खेले. बात है कल मैंने एक स्टोरी डाली थी मेरे इंस्टाग्राम पे. मैंने एक जिम की स्टोरी डाली थी मेरे 2016 की फोटो. उसमें तुम लोगों ने फोन नोटिस किया कौन सा था? किसने नोटिस किया कौन सा फोन था? देखा? वो मेरा पहला फोन था. BGMI PUBG का. PUBG में जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वही फोन से स्टार्ट. किसने देखा वो फोन? Get him down and finish him off. He's just swimming, trying to survive for a bit longer here, but it could be 7 C's. देखा था तुमने इंस्टा स्टोरी पे मैंने एक फोटो डाली थी. उसमें मैंने एक फोन पकड़ा था हाथ में. देखना अगर नहीं देखा तो अभी भी जाके देख. Potentially with Vampire Esports if they're able to close out on the Nigma Galaxy player that is. भाई तैरने दो ना भाई. इसको क्या प्रॉब्लम है तुमको? Sarang taking some damage now. Man, my Note 4 था यो. Ravenclaw's actually going to अपना गेम स्टार्ट किया. That's a point. NT रे सारंग. NT in the chat. NT for Sarang. 5 eliminations for them. That's 5 points plus the guaranteed top 3 here. That is also 5th for NT for Sarang guys. So it's 10 points for them in this. Stream चोरी हो रही है. रुक जाओ उसका चैनल उड़ा देते हैं. उसको चोरी कर देते हैं उसके घर से. रुक जाओ. Have the upper hand here. I think Esports might have heard me. They decided to disengage a little bit there with Emoti, especially with the new circle that they ended up getting, and keep an eye on where चोरी वालों का लिंक मिल गया. what just happened to Ryan. चोरी वालों तुमको घर से चोरी कर देंगे. तुम्हारा चैनल गया. तुम्हारा चैनल जाएगा इसमें. अगर रीस्ट्रीम करोगे तो चैनल जाएगा. सीधा जाएगा. Try to get out of here. Oh, Ravenclaw being able to power 1v2. Now it's going to be a 2v1. VP man, VP with the chicken dinner. Teams and players being able to clutch that 2v1. Can Emoti do it here? He's not going to be able to do it. The grow side just way too much. And VP duo man gets the win on this first show match for day 2. क्या बेलो ऐसा ढीला स्टार्ट करा रहे यार. मेन मैच कराओ बे. पहला मैच यार ऐसा मत करो यार. कौन सा वाटर मैच यार. मेन मैच स्टार्ट करो बे. हो गया बस अब PL टाइम. Because this was a team that only had 1 point after 2. खत्म भी होगा PL. 赢2不误啊！但最后拿到。会有一个高棉之战队在身上，决出来了一个胜负，那么 GPay 后面的比赛就不好打了，很难下山了。对于 ST 来说，下去的这个位置再往前是有这样的一个小棚区可以去待的，但是我们发现了，好像这个烟数量并不是很多，旁边的蹦蹦也冒。关键是他已经开枪很久，7杀瞄着这个方向瞄了太久了，他先要击到7杀，然后才能进到那个房间里边。是。再来看一下这边。
पैराडाइज की बिरयानी खिला दो अंश भाई LGD 和上海 NV 腾讯视频战队现在是顺位上来看的话 ，NV 需要出自己的这个大方面需要付出代价。那现在 LGD 也不一定就是真要拔这个大仓，应该是看一看，如果 NV 要强行出的话，可以是打一个侧身；不强行出的情况下，自己的重心还是要放在东北侧，毕竟东北侧如果你清下来了，就是有一个很大的反斜坡啊，反斜坡，而且还能够拿下很多的淘汰分。你刚才给山治指的这条明路已经被 TC 给堵死了。是，这 TC 率先站到了这个位置来 ，NV 选择了拉出车，直接往上冲。LGD 也是等到了上海摇摆腾讯出车的这一个瞬间，但是旁边有676的一个出枪和干扰。DCWY 也是一颗手雷带走了山治 SG， 这场比赛确实是痛失好局。再来看一下 LGD 这里也不能太着急，因为刚才自己出枪呢是被身后的676所干扰，但这边 NV 呀有一点没有办法往圈里面再走了。两场比赛是拿下4分，那就要看看后面的3张地图当中，他们能不能够继续的扩大自己的领先优势。LGD 这边在清理完了 NV 之后，把自己的重心放在了东北部，过来直接一个高大跌，先打掉了微笑。LGD 好像在东北侧没有什么人能够限制到他们了，毕竟 RSG 现在的物资是非常不乐观的，而且侧身还有 TC 的枪线 ，RSG 上岸不成，在水里更是没有反击之力 ，YZ 扛住了侧身来自于 AG 的压力。LGD 这边选择到了一个双开。左打 AG， 右打 RSG， 在东侧只要能够杀出一条血路，还是有机会能够和 TC 战队竞逐一下决赛圈的。但 TC 现在不要太舒服啊，又吃到了一个北侧的切角圈，前期堵住山治那条道路，拿下他的防区，实在是太妙的一手操作了。而且苏皮这里也要小心一下，来双响，弟弟一颗手雷，直接是让 LGD 的攻势啊暂时得到了一个很大的缓解。对于他们来讲，这一颗手雷等于是续了这场比赛的一颗命啊！哎呀 ，YZ 靠枪打开了一条道路。是，但是 YZ 自己被信号接收区给带走了。RSG 同样也倒在了信号接收区之外。那看来这场比赛 TC 战队是10拿9稳啊。但是这里确实是因为 AG 的2个人现在一个是属于一个倒地的状态，背了几下，想要背到信号接收区里面，居然背成了。再看这边程 C 必须要应对掉对方，不过呢，随着释怀的一波3连暴走 ，TC 战队是要拿下这场比赛的胜利。AG 战队虽然说背到了信号接收区内部，但是这个位置太过局促了。虽然说释怀和 WY 还要休整一下，但是这个时间足够了，只要阿莱一个人卡得住，直接直架对手就可以了。是的。与此同时，还要在这样的一个紧急关头，恭喜一下释怀拿到了自己联赛的900个淘汰。恭喜！ AG 战队阿兰没有直架，也是怕对方 AG 利用 TPP 出手将自己快速秒掉，还是选择了更为保守的一波，在石头后面卡视野。其实 TC 也不着急啊，因为现在明显不在圈里面的还是 AG 啊。如果说剧情刷走之后呢，他们直接选择打靶就可以。这边收到了一个9，放到了石板。非常细节，他没有靠近石头左探头，而是拉开掩体，防止卡枪。面对秋离，最终还是 WY 收下了最后一个有生力量。恭喜 TC 战队拿下了本场比赛胜利。对于 TC 战队来说，这一局可以是淘汰和运营2不误啊！在最后拿到那个人头的时候，如果没有记错的话，本队淘汰已经达到了8个，而且他们抓住了 SG， 放走了这个行对垒啊，没办法了，是选择到了一个下水。那大多数的队伍呢，在发现前路无处可走的时候呢，是直接选择在原地，要么清自己身后的队伍，要么选择和自己北部、南部的队伍这样掰掰手腕。SG 虽然说都没有能够打到最后的决赛圈，但是他们的理念就是搞不好。有人下水，有人架枪，下水能够来到对岸，然后再掩护自己后面刚才架枪的人再去到对岸，这是一个非常科学的两栖作战的一个体现了。是的，那上一个回放来一起回顾一下。बराबर बोलते मैं उधर रहूंगा तो ही खाएंगे तो उपास कर रहेगा उपास मेरे लिए उपास कर अरे भाई बाप रे बाप आओ भाई तुम्हें सुनते हैं भाई ठीक है नहीं तेरा भाई सक hashtag सिंगल hashtag सिंगल ये बोल दिया तो और क्या बोलूं और क्या बोलूं डार्लिंग बोलूं इस बात ये कर रहा है अरे पीसी लगा स्ट्रीम कर रहे क्या अबे ये तो स्ट्रीम कर रहे हैं टॉप सीधा लाइव
They did well in duo. They didn't do so वे तो stream करेगा लगता है एकदम I'm curious to see इधर live bounce back. You guys did obviously miss out on yesterday. We had इंडिया में कास्ट नहीं है वे एक भी each of them got 2 up. ओशन को देख के थक That is a fantastic start for ओशन बुरा मत वाला भाई if you're one of the teams trying to हम लड़के ऐसे ही यार क्या करें हमको I would say that yesterday is a very big outlier. Like the circles were rough. Like a lot of times, like Pizza in a good position, Alright in a good position, Stalwart in a good position, then hard shift, and I think that that's something teams need to work on today is being able to adapt to those situations. If so, a win could happen, but I still think we saw some consistency, right? Getting a few points, but not able to quite get the win. Yeah, if we see the same tendencies today, today in fact. Female caster कोई है क्या इंडिया में PUBG BGM में navigate more central and try and play from their edge. If we're getting all of these hardship constantly, ओशन का दुख दर्द पीड़ा कष्ट भेद वो सब सुन के थक गया थोड़ा लड़की चाहिए दीदी फीमेल caster constantly, so a central position might work. But Ocean is a legend, man. One thing we've not really discussed whatsoever, and I want to touch on really quickly, was the fact that in-game leading with all of these new maps coming into the pool, and of course with the change in how the zones work, that is extremely difficult to do. And we saw Alpha 7 just be so consistent throughout the entire day. You got to be an encyclopedia of PUBG Mobile. Encyclopedia. An encyclopedia. But going from 6 battlegrounds across the whole day, and so an understanding as well in terms of even as I've already used it as an example today, but that Vikendi. आज आपकी आईडी के साथ पुरानी वीडियो देखी कैसी लगी भाई? Approaching that is difficult. You saw people swimming in the ocean for so long. It's difficult to adapt to. I think this is like a really good way to show if you're a great IGL. If you're able to find consistency in maps like this, you're really one of the best IGLs of the world potentially. All right, we got a minute 15 till we head into our first match here. Take our second overall. I want to give a quick shout out though to Aramco and of course Saudi as well, making this event possible for all of us to enjoy, especially the players who are having a great time live in Riyadh, Saudi Arabia. But you know who's also having a good time here? Our two commentators. We got Avenger and Sever Worlds Gaming coming back yet again to cover all the action of Erangel. I have been having a great time. We've been playing PUBG Mobile at night, going to the pool, talking about PUBG Mobile, eating lots of goodies, going to the gym as well. I mean, and then we get to cast. Wait. What, going to the gym? Yeah. I haven't seen you in the gym. I go when you guys aren't there. Oh, okay. Yeah. Wait until you see these gains in PMGC. Caster भी जिम में जा रहे हैं इनको भी चाहिए दिखता है फीमेल caster No, see what I do is I go inside, grab a water. Necklace road पे तो necklace road का why Oh, okay, yeah. I think Jason thought that you were just on the way. Shout out to by Clutch Boy Big Shorty. Kind of going through the gym and then you go in there. दीदी का makeup उतरेगा तो ocean निकलेगा. Games are starting very controversy वाली बातें मत करो यार पागल हो गया मोहित भाई यार तुम पिटवाओगे भाई किसी से तुम भाई पिटवा दोगे भाई मेरे को किसी से भाई ये सब बातें मत करो यार स्ट्रीम पे And maybe just maybe we could have a military base. Let's see what happens once we get out of the कुछ तो भी बोलते हैं बंदे कुछ तो भी बोलते हैं मां to wrangle the first and most known सब जिम जा रहे हैं खाली स्नैक्स भाई नहीं जा रहे हां बे एक मैंने देखा बे एक चीज देख रहे हो एक चीज देख रहा हूं मैं तुमको एक बात बताऊं जब से मेरा हाथ का इंजरी हुआ है ना ठीक है जब से मेरा हाथ का इंजरी हुआ है ना मैं खुद जिम जाता था तो मेरे को तो ऑफ कोर्स अच्छा फील होता था कि हाँ भाई जिम जा रहा हूँ मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ बॉडी बना रहा हूँ जब से हाथ का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मेरा जिम बंद है 3-4 महीने हो गए 3 महीने तो हो गए मेरा हाथ टूटने का सब जन ने जिम जाना स्टार्ट कर दिए भाई हाँ कम्युनिटी में कितने लोग जिम जा रहे ऐसा कितने लोग जिम जा रहे भाई जब से मेरा हाथ टूटा तब से अलग सब जन अपना अपना जिम स्टार्ट कर रहे स्टोरी वोरी लगा रहे मेरी और जल रही है उनको देख के कॉज भाई मेरे को जाने का है ना मेरे अंदर मैं दूसरों की स्टोरी देख के भाई अरे यार ये तो मस्त जिम जा रहा है मैं नहीं जा पा रहा हूँ मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहा अपना गलत बात है भाई मतलब मेरा हाथ टूटने के बाद में सबको स्टार्ट करना था क्या पहले से कर देते स्टार्ट जैसे हाथ टूटा उसके बाद सबके सब जिम जा रहे सब बॉडी बना रहे सबको ऐप चाहिए सबको फिटनेस चाहिए अचानक से अरे ये क्या बात हुई यार मतलब जानबूझ के मेरे को फ्रस्ट्रेशन दिलाने के लिए जा रहेगा जिम वैसे फील होता है कभी कभी मैं फुल इरिटेट हो रहा हूँ भाई स्टोरीज जिम की स्टोरीज देख के So you're seeing a lot of Alpha 7 players here on this stats and it's just जिसको देख रहा है उसको बॉडी बनाना है भाई with this playing path I was going to say Vampire Esports and Soggy Crawdads would have loved मुझे मैं वापस आ जाए फिर लड़की ला देंगे स्नैक्स भाई के लिए so you know just something to keep an eye on भाई तुम्हारे भाई के लिए लाने की जरूरत नहीं है with Alpha 7 so the other teams don't really have enough time to think on how they're going to be अरे मतलब क्या बोल रहा हूं यार and Alpha 7 is just मैंने लाने की जरूरत है भाई कौन देखता है अपनी शक्ल take full advantage of that and I think that's what's been working out लाओ भाई लाओ we'll see what is जरूर मिलाओ and you can see as long as I'm Where do you stay in Hyderabad घर पे
adventure. That's home sweet home. That was almost, or if not more, से अपने drop पे गई है farm. Second place. Farm नहीं जा रहे. मिलता जा रहे. Crazy. As you see on the map here, we have an R8 Alpha 7 potential fight. Looks दूसरा like हाथ Alpha 7 उसको potentially use करो frustration. अरे Godfather अरे ओए. I'm not sure if they could reach सुन that far. पागल हरकतें बंद कर भाई स्ट्रीम पे हवले. They could also be अबे इसको बैन दो बे. क्या तो भी बोल रही. छी भाई कैसे गंदे लोग हैं बे स्ट्रीम पे. Is going to try to go. मैं फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीमर हूँ यार ये सब मेरे को क्या सिखा रहे हो यार. Plenty of room. शरीफ लड़का हूँ भाई मैं ये सब मेरे को मत सिखाओ यार. Yeah, of course, everyone is not going to be completely satisfied with where they get. Of course, again, thanks to Sunixperia for being our official smartphone. जो लिखा है बच्चा ये कम से कम रहेगा ये स्कूल में रहेगा और ऐसी बातें कर रहा है. We have some amazing stuff installed. स्कूल में रहेगा और ऐसी बातें कर रहा है वे देख रहे हो. See Enigma Galaxy taking full of अबे हैदराबाद नवाब 3 बनाने का इरादा है क्या? बॉडी बनाए. अजय रश भाई अगर आप करोड़ों रुपए अकाउंट में डाल देंगे जरूर बनाएंगे. हैदराबाद नवाब 3 का 30 तक बना देंगे भाई. 3 का 30 तक बनाएंगे. टेंशन क्यों ले रहे हो? भाई हिंदी कास्टिंग देखो उसमें डिले बहुत रहता है. I'm back in stream भाई. वेलकम वेलकम गाइस. एक बार प्लीज रोनी भाई को वेलकम कीजिए. स्पेशल वेलकम रोनी भाई को. That doesn't sound bad at all. That'd be nice. Here, Ronnie, वो है ना रील आता है ना. वेलकम करो भाई रोनी भाई. Screen ID. बता बेटर व्हाट 7 also in there. Alpha 7 here on the north side. फेवरेट बीजीएमआई प्लेयर शेवान भाई आप ही हो मेरे फेवरेट बीजीएमआई प्लेयर. आपका जो सना ना 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 स्प्रे ओए. This is where we were talking about, and what the desk has also been talking about before the last game, is of course that we're going to have this very, very extreme approach. भाई बच्चे बड़े हो गए कुछ भी बोल देते हैं. अरे ऐसा मत बोलो. Hard focused on. भाई तुम क्या तुम्हारी those points from getting the points from the game that Habibis man. यल्ला Habibi. $60,000, but also focus मार देगा मेरे को यार क्या तो eliminations. The first T. अबे देख रहा होगा इंडिया के मार देगा. क्या बोल रहा था? Strong with your favorite. भाभी है वो भाभी. Take these players on. शेख तुम ज्यादा नजर नहीं मारती यार. हैदराबाद में बैठे बैठे वॉच पार्टी करती बट तुमको उधर आगे उड़ा देती अगर तुम हमारी लड़की को देखती. तो तुम्हारी भाभी होती हो. So really big on eliminations in general. If you're able to wipe a few teams, Adnan bhai, big shout out to you. Eliminations throughout, as you saw with Damon here yesterday as well. Bhai, I'm married. अरे नमस्ते नमस्ते अंकल क्या नमस्ते भैया कैसे भैया $1,000 just for the rewards. PL more interesting than this watch party. अरे ऐसा नहीं है. So there's just so much money in the line. After party showdown यार फनी इवेंट ऐसे रहेगा स्लो रहेगा थोड़ा. Yeah, we saw some of the players yesterday actually. अब आप कौन कब से ग्राइंड करोगे? मैं तो स्टार्ट कर दिया भाई ऑलरेडी. यार वो कास्टर को देखकर अब थोड़े one of the players from Alpha 7 and इसलिए हो गए भाई. अरे नहीं ऐसा थोड़ी फिसल जाता है यार. ऐसा तो कितने लोगों को देखा है भाई. ऐसे थोड़ी फिसल जाते हैं. Because they're trying to go not only for that first special. भाई ऐसे थोड़ी फिसल जाते हैं. ऐसे तो बहुत लोगों को देखा है भाई. ऐसी बातें कर रहे हो लोग. सख्त लौंडा एकदम सख्त. We're going to be seen today or what or which teams are going to be. भाई एक दिन फिसला था with the vehicles because that does count. पर वो मॉल में गया था प्रधान के साथ. वहाँ पे देखते मैं फिसल गया. प्रधान को बोला प्रधान देख सिंड्रेला देखेगा. That runner would kill, but he was just ducking and weaving. हम दोनों शॉपिंग करने चले. And उससे ज़्यादा नहीं, उससे सख्त लौंडा एकदम सख्त लौंडा. Completely limited instead, and that was एकदम actually सख्त super भाई. fun मजाक to से see how भाई much मैं they're trying and focusing. एकदम Of सख्त. course, it's important. देखते पिघलने जाता भाई. Yeah, usually if you go the first उस दिन पिघल गया. उस दिन खाली मैं बोला प्रधान को देख प्रधान सिंड्रेला देखेगा. I think that was in the back of his head. देखेगा मैं बोला देखो. Money. $2,000 sounds really nice for this kind of. उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया. मैं देखा चला गया. अपना शॉपिंग करने चला. But they did end up getting that squad wipe. मजाक से ना सीरियस बात हो. प्रधान से पूछ लेना अगर. प्रधान भी बोलते हैं तेरे को कब से दिखने लगा. वो शॉक हो गया. अरे तू तो ये सब करता नहीं था. मैं बोला अरे करता नहीं था मतलब अरे. We do end up getting some fights where we अच्छी दिखी बोल रहा हूँ भाई. ये लड़के कितने अच्छी दिखती है सब. वो शॉक हो गया. बोलता है अरे भाई सब ठीक है ना तेरा सब सही है ना दिमागी अरे ये क्या तरीका है भाई. And then these teams went back, watched the VODs and decided to, you know what? मैं लोग कब खेलोगे रात के. आपके आर्म इंजरी के बाद आपको खेलते नहीं देखा भाई. अरे मैं YouTube पे स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई. क्या बात कर रहे हो यार. We continue on through the game, maybe go for those airdrops, maybe go. मैं फेस रिवील कर दो लड़कियों की लाइन लग जाएगी. डेडली भाई आपकी आंखें या तो प्रॉब्लम है या तो आप नशे करके बैठो. ये मेरे हिसाब से ये जो देख रहे हो इसको फेस ही बोलते हैं. इसको और कुछ नहीं बोलते भाई. कह रहे फेस रिवील कर दो. हौला पे लाएगा रे. तुम्हारा फेस कहीं और है क्या. हमारा यूजुअली ह्यूमंस का फेस इधर ऊपर ही रहता है बॉडी के नेक के ऊपर. तुम्हारा कहीं और है लगता है. समझ रहे हो. तुम्हारा फेस वो है दिखता है. हौला है क्या रे. कुछ भी बोलते रहता. 25th इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच है भाई. देखेंगे भाई.
तेरा फेस रिवील कर दो भाई इंसानों का शक्ल गर्दन के ऊपर रहता है भाई और कहाँ रहता है शक्ल और कहाँ रहती है तुम्हारा स्पेशल शक्ल किधर और है समझ रहे हैं You're going to be able to focus on that. And yeah, says to G on screen. Scout playing or not? अरे हाँ पे scout गिर रहा है क्या guys? $40,000 after 6 games. 32 लाख रुपए भाई. Just crazy. It is literally $6,000 per game. Let's see if they're able to continue that. 36 right and then you have off 7 with 4. अपने 12th का रिजल्ट दिखाओ बिग फॉक्स भाई. I mean you have team. तुमको पर्सनली दिखाऊंगा कभी मिलो मेरे को पर्सनली 12th का रिजल्ट स्पेशल बताओ. That's what I was going to say. They haven't won. क्यों पढ़ाई की बातें कर रहे हो यार स्ट्रीम पे? So that's impressive. पाप लगेगा पाप. Bigatron, the strategies from what they did tell me, I think they might just be looking to finish out fights a lot faster. Right. I felt like yesterday they took too long and it ended up hurting them. So I'm intrigued to see if they are going to be going for that. As we do see this circle, pop south. Teams are going to be pushing south. Going to be seeing Damn One Kia trying to make a push there from school. And guess what? Deadeye's being able to spot somebody from Damn One Kia. Sir is going to be. भाई वो फेस की बात नहीं कर रहा था. फेस की बात कर रहा भाई फेस रिवील की बात. Love you bye, love you too मेरी जान. If it would have been me, I would have ended up getting knocked by my own. Great documentary bro, got emotional. On Twitter. अरे स्काउट कर रहा है क्या दिखा नहीं रहा. Let's see what Damn One Kia is going to be able to. Lee versus Kia Motors. Those guys kind of have the upper hand, being on the roofs already. Garage over there by Song. And Fabian can be approached quite easily. B versus Kia Motors. On top, literally on top of that two-story balcony. नहीं भाई आप education में क्या कर रहे हो BB? And also one nade in hand, potentially the Molotov could take something down there. Is it gonna go in? It's gonna go in. It's gonna do a lot of damage onto Song. Just playing करेगा बात. Fabian is on the outside there on the back door, so he's trying to hold that corner. It has been smoked. Damn One Kia is getting reinforcements. You can see Forrest now starting to move up with this other teammate as well. He went and picked him up, and now they're going to be making this push to make it a full squad. They need to be careful because somebody from Kia Motors Thar में right there, they crashed into Thar में the घूम रहे rock, and now they're being Jeep पे spotted. Smokes are going to come out. Deadeye top sir, is he going to be able to blow up that vehicle? He does end up getting some shots on himself, and now you're going to be seeing the other Deadeye's players starting to rotate and see maybe he can get an angle on the. Shout out to the guys, Sayanta, big shout to you. Middle and out in the open. Virat or Sky, Virat man. Sky is crazy man. Sky भी बहुत खतरनाक player. But ऐसा Virat is all time favorite. Make something happen here. सर मैं गुस्सा हो गया. Deadly भाई नहीं रह पाया. मजाक कर रहा था Deadly भाई यार तुम serious ले लिए. Something more. Shari tries to pre-net that corner that Fabian potentially was holding. You always inspire me and you're all fans who like him. Thank you so much. But मेरा ही gym बंद है अभी. Molotov on feeling the bad. top. That is a feeling really sad. good Molotov. Oh, knock किया रे उसने. Cannot run up. दूर से knock किया भाई. भाई shotgun चला रहे बे. Shotgun चला रहे भाई. Was holding a big off angle for Deadeyes. This is going to be huge for them. How are they going to be able to respond? Are they going to be able to take advantage of this? Oh! Forrest and Junie end up getting actually knocked and eliminated. They are. Oh, they're both knocked still. They're not eliminated just yet. They just got knocked from that. Shifu's going to be pushing in. Wait, bye. That is really well played. More action. Bhai, kitna shotgun chalaoge bhai? Can he get one more? Nope. It's a 2 versus 2 effectively here in this case. And भाड़ो कर रहे हो भाई. Fabian finishes off Shari. अबे मतलब shotgun कितना चला रहे बे आजकल? Has to try to see if he can push more. Oh my God, it's really well calculated. He heard it potentially. Let's see what Deadeye's guys is going to be able to do this one. Turlov, Shifu with the Molotov. Oh, that's it for them. Song. ठीक है भाई तुमको यार buffer Fabian going for the high ground too. Push the low. Being able, Junie going to be able to finish. Ends up getting knocked as well. Shifu last player. Shifu भाई clutch कर दो भाई. The last player it is going to so 1v3. 1v3 if they end up picking up their teammate. Let's see if this grenade is going to hit on anybody. It is going to get that elimination. 1v2. And he is able to secure himself. Bye. $1,60,000. That's great. That's comforting now, considering that your whole team is already eliminated. Oh! First team elimination now. Oh my God, Janine, no, that is just so unfortunate. Now Shifu saw that, and he's going to be pushing right now after that first aid pop-off. Saiga, oh, that's a good nade by Fabian. Really calculated. Now Juni's going to be able to be picked off. Damn One Kia is able to take out cricket guys. Catch practice कर रहे हैं क्या? So does that count? किस्मत खराब थी इसकी वो gap में से गया नहीं. Imagine if it did. As we are seeing a replay here from भाई वो gap में से नहीं गया भाई. Star Wars Esports already eliminated Deadeye. Andy, Shifu Andy in the chat. Happened to them, eliminated as well.
First team elimination. Shifu and ND in the chat. Yep. Being able to close that one out, that was great to see. Now 7C on screen here. 7, they're going to be rotating in. The circle has popped, and it's kind of centered on Milta. And Shifu and in the chat. Surrounded on the north side. That's why you see 7 trying to get into those. They have Enigma Galaxy ahead of them. Alan a little bit far away from his teammate here. He needs to be careful because all the other teams are going to start trying to get just a little bit closer to me. तो मेरे वैसा ग्रेनेडियर निकला रे मैं भी ऐसे ही ग्रेनेड करता हूँ देखा है मेरे ग्रेनेड का भी एशिया's नंबर 1 ग्रेनेडियर मैन ऐसे ही नेट रहते मेरे मैं दीवार पे फेंकता हूँ मैं कैश पकड़ता हूँ फिर वापस फेंकता हूँ at the after party showdown PMWI. क्रिकेट बहुत पसंद है ना मैं down. I think they have realized तो दीवार पे नेट फेंकता हूँ कैश पकड़ता हूँ अगर हाथ में फुट गया तो फुट गया नहीं तो वापस फेंकता हूँ capitalize on this. He's trying दे देगा क्या oh he thought about it. It was lined up. That would have been sick. 7C. Scout spray got Sarang Aladdin. Madman नहीं करता. They have a good amount of control here. The question is where does the चल 7Cs to split with that warehouse. अंडे खाते हो जी नहीं जी. Building flat top. Vampire on that northwestern side, actually holding out the dirt road. Freak by ने. Freak finds Desha भाई with a headshot. Desha का दिशा हो गया. Huge. An R8 is going to be pulling up on the high ground tower on that west side on the farm. They're going to have some control. कल आपके मैच में आया था कल तो मैच में खेला ही नहीं था. Valorant की बात कर रहे थे हाँ. Valorant खेला था. बस आपको इंटरनेशनल में सन न मारते देखना है जी. आह shit. मारेंगे. Towards the compound. Favorite suit lock from Surat. Thank you bye. Once they're looking to turn it around, let's see what this new circle is. मैं old iPhone का क्या करते हो? वो daily use के लिए use होता है. iPhone 11. They did end up losing 2 players, but मेरा normal phone है वो. मतलब daily usage वाला. Feels good, and this is a team that can definitely slow down their. अगर आप gamer नहीं होते तो आप क्या करते हो? Soul Nexus मेरी documentary देख लो पता चल गया. Oh. Megatron. In a way. Oh, ये कैसा hard shift है भाई. And it's interesting. ये कैसा hard shift है वे? Teams are going to be reacting to that because if we चल 7 के स्टिकर डाल दो इस चैट में. Straight down in the middle where there's absolutely. Crafting की मैडम से पूछो गेम कब आएगा. Huge amount of field there. There's a big wide compound. मैडम नंबर ब्लॉक कर दी मेरा. Shots coming in for Prestige. Takes down Cole. मैडम ने नंबर ब्लॉक कर दिया. Nice aim from this young man. He's able to connect a few more. And they obviously know that now it says to G. They know that they lost players in the kill. बताओ स्नैक भाई. चटपटा डोसा इडली वड़ा 22 रुपए जी. In that case. और फिर चटपटा. चाट कुछ भी चाट बहुत पसंद. Alright, are they going to push aggressively on that? सबसे पहले South Indian food is love. I think he was just readjusting. South Indian food is yeah, I thought they were actually love, literally. I was hoping that they would. Prestige just trying to hold the angle, trying to see if anybody. Yeah, man, 7Z stickers in the chat. Trying to figure out how they're going to be able to escape this. It seems like their car is still intact. It might have all of the 4 tires. Tall guy, you see, his helmet is sticking out of the roof. That's basically Jason driving around his cars. So that's what it feels like being tall and driving. He has to have a sun top roof, you know, like has to be popped off. Oh, you get knocked out. That is so unfortunate. Try to go for that center shack. More shots come toward Colsey. Can they get him? Bandar connecting a little bit, but not enough. Colsey's going to be able to go into that. But now they have this information that there's just one player they can push that. And Rat is going to have that information too. They are sitting pretty in this compound. We were talking about that big white compound in the center with the fields around it. Now Rat, they're pushing out some nades toward him. I think he's inside the shack. He's और मैं ट्राई आउट दे रहेगा संग नहीं अभी गेम ही नहीं है घंटे का ट्राई आउट into the shack. Vampire now on the move. They're going to be moving on. Megatron trying to back him off with some shots too. Team Falcons might have been able. I think it was powerful. Might have been able to get some shots off as well to Vampire Esports. Vampire Esports continuing on that rotation. They are going to stop, and it was powerful. Getting an angle there on that rotation from. Next international tournament कब है? He's going to be keeping an eye on Vampire. Game आ जाए यार उसके बाद idea देंगे. Very close to them now. They do have a 3-2-1 split. भाई केरला कब आ रहे हो? आएंगे जरूर आएंगे. I think one of the players, one player sucks that was far away. Now he's starting to get. उसने किस लिए पहना मेरे को क्या पता? Now we're looking at. मेरे को तो ऐसा लगा उसको इंजरी हुआ है. Kia. At 7Z's मचाएगा full boom bomb. Let's see, bro. Hope for the best. India up in the chat. Ooh, that's a good Molotov. It does block off that doorway, but I think he was in the stairway and on the other side. 7, they're gonna have to cross, and you see here in the back, 7C is over there, and they could be filling in and maybe sweeping in behind Alpha 7. So Rever was right now on watch duty. He's going to have to get the information for the team to make sure that they don't get pushed from behind.
Circle is closing here. The teams have majority of the teams have managed to get in. We only lost Deadeye's guys and Stalwart so far. So it's gonna pop 7. It goes hard southeast. खतरनाक zone chip है भाई 7 zone ले लो भाई. I thought there was gonna be. इनको मारना पड़ेगा इनको. कौन सी टीम है? A7 को मारना पड़ेगा. Guess what? A7 versus 7 this time, man. Wonderful. Damn, one kill is gonna be super happy too. Rod. I mean, Rod couldn't be in an even better position. उर्दू लगा भाई. उर्दू में यार delay बहुत है रे. All right. More than likely, he's going to be looking to take that compound. Bigatron, he's going to have to go from the north down south, and they might try to crash on some of the buildings there too. Vampire Esports, Team Falcons, just so many possibilities in Team Falcons. More than likely, just trying to wait, see how some of the other teams are going to be. Bangalore का vlog नहीं आएगा क्या? Bangalore vlog नहीं करा रहे ना? Kind of elimination. Vlog नहीं बना. You can see Spray got there being shot at. As he was trying to make scout OP, man. Towards that building, scout, trying to spot somebody. The rough setup though, only a little 1 helmet and 1. Let's fight it, intense fight, guys. चलो चलो चलो. Stickers in the chat. आ जाओ, serious हो जाओ. बच्चों जी बहुत होगी. अभी serious होने का time है. चल अलादीन कर लेगा. आंदो भाई, आंदो. This location, they're gonna have to push on to the Enigma Galaxy guys. They're gonna have to smoke to get all the way over there now. A lot of teams is going to have to push in from this northwestern angle. Vampire, Bigatron, Falcons. Not a lot of space to accommodate all those teams. Not a lot at all. And you can see SGG there being eliminated by R8, and now R8 getting shot at by Rod. अरे उधर बताओ यार, मिल्टा में क्या हो रहा है वो बताओ यार. Nade by Rod. मिल्टा का बताओ भाई, मिल्टा का बता दो यार. Was going to happen at some point, but it's an interesting push from R8. You guys can't currently see it, but Falcon versus the players are actually, you can't see it. The players are just so spread out. I think they were trying to see how they were going to be able to approach this. Yaar, Milta batao, Milta. Because now they're going to have to be careful with some of the other teams that are being rotated from the north. We talked about it earlier, Bigatron. You can see Prestige here having to make a push, trying to revive his player. And meanwhile, Bigatron and Vampire Esports are slowly starting to sneak their way in. भाई मुझे लगता है थर्ड लेयर का aim is more stable than first level. Is it so? Aim नहीं bro, उसका movement stable है थर्ड लेयर का. Genfos, can you hit this? Aim थोड़ी भाई, aim तो कोई भी layout पे खेले, aim तो आपके ऊपर है. That would have been a great one. And Galaxy getting eliminated. ये मैं अनबैन हो गया क्या तेरा वॉइस पैक लेने का है, मैं खरीद नहीं पाया. वॉइस पैक वापस आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता. But game का let's see. In a really good spot to defend this. Goes down. And now Genfos दे दिया भाई. Try to confirm those eliminations out there. Heavy गिरा है, अच्छा गिरा. Soxy, Misery inside this building here. Salt Desha has to relocate. Has to try to get up. Gets one more. Stat gets down Soxy. Munia is able to defend this. Misery's on the top. उसने घूम के मार दिया बे. Desha could be pushing that. And Genfos is still gonna be alive. भाई मिजरी डेंजर प्लेयर है. ओह भाई खतरनाक प्लेयर है बे. One of the players there from Rod. भाई घूम के मारा उसने. But ultimately he exposed himself for too long. Here comes the DBS. He's not able to connect. Desha with the DBS gonna be pushing. 1v4 for him man. 1v4 for him. दो और मारने हैं. Heard that DBS is. भाई दो और मारने भाई. Anything to do with that. We saw what happened yesterday with Top in Livik. Really good movement for Misery though. Jumped up the balcony and then jumped out off. SK-Ton outside. Munir Desha, last two players. Misery putting out some more. Oh, 1v1! Shots coming in for Misery. एक और एक मारेगा 1v4 है जगह. Misery versus Desha potentially in this case. They have to clean it up quickly because R8 is lurking in the background. अरे भाई ये पागल player है बे. I'm making sure he gets that elimination. You mentioned it. R8 is going to be making Luxy does end up getting knocked, and he is currently getting shot by some other team. I think it might have been Team Falcons. Team Falcons earlier did end up eliminating Vampire. अरे रेव होगा क्या वो? मुश्किल है. यार है रेव देने वो. ना नहीं हो पाएगा. The only team right now with 4 players. गुजरात होगा भी आके क्या रेव? 7 Esports, and if I'm not mistaken, I think they already eliminated some of the players too from 7C Esports. नहीं ले रहा solo compound ले रहा. Genfos still alive. वो right चला गया left चला गया. Player from Murad. Quick कर दो. He's going to have to try to relocate a little bit. Genfos takes some damage here from SK-Ton. Now Desha saw him. Now they're going to have a fight. Info on hand, pushes him aggressively, takes him down with the drop. Oh, क्या drop shot दिया. Shot, also counter drop shot. Drop shot. Desha is able to take SK-Ton down from R8. Super well executed by Desha. You can drop shot me. I'm going to drop shot you as well. Mystery
He knows exactly where they at. Let's see if this nade is going to be. डॉक्यूमेंट्री में आपकी दीदी आपको कमी ना क्यों? अरे क्यों नहीं बोल सकती भाई? भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है भाई. सब एक दूसरे को छेड़ते रहते दोनों भाई बहन. आपकी सिस्टर है नहीं है? पहले ये बताओ. अगर आपकी सिस्टर है तो आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए भाई. बस सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन ऐसे होता है. तो एकदम एक दूसरे को इरिटेट करो, एक दूसरे को पोक करो, एक दूसरे के साथ मस्ती करो. इसके लिए उस वे में कमी ना बोल रहा है. इसमें बुरा क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या है? एंटी रेम इज Bigatron eliminated by Alpha 7. Alpha 7 right now trying to go for that match reward of most. अलादीन चिल कर रहा है गाड़ी में. They have a good upper hand here. Only Team 4 guys alive. 7C's, 0 eliminations so far. Damakia has 8 though, but they are split, so they could isolate the fight quite easily with Juni on that right small shack with a few smokes and a little bit of utility, and they're going to be able to cross that road, or at least try to see where we're going to be ending up here. It does go to the other side of the road. Revo finds Aladdin. That is huge. Revo on the top of the restart. I was wondering when they were going to be able to find him. He was just chilling there in the car behind him, and I was going to tell you that could have been really, really scary. Tell Scout, Chad! You can see Scout still alive. We know how sneaky he can be. Can he survive this? He ends up getting out of the car, laying down, popping those stars. By Scout. Riju just shooting at the smoke, seeing if anything connects. And here comes the push. Alpha 7 against Damwon Kia. You know, Damwon Kia's going to have those DPS at the ready. चला के बता रहा है. What a beautiful grenade there from Garena. Here comes the push from Alpha 7. Alpha 7, the aggressive team, they're able to eliminate Damwon Kia. And Alpha 7 just slowly but surely continues moving on. Alpha 7 का और एक chicken. That they're currently showing is amazing for this team. Alpha 7 का और एक chicken भाई. To be in the zone. Take some shots. He ends up backfiring. Revo ends up knocking him. NT in the chat. Alpha 7 जीत गया tournament. Alpha 7 is too much for everybody right now. Yeah, Alpha 7 has won this tournament, guys. Through that little ticket booth, Revo is just on point right now. Prestige is hiding. Utility comes out from the Steeds. That's really on point here. Finds Sarang. And 7C goes down in third. This is going to be great for RA, even if they don't end up getting chicken dinner. Prestige. Is a great Revo ends up getting the final elimination. And Alpha 7, ladies and gentlemen, on the first match of today, showing why they are in first place. Look at my Mafioso right there. They're going to be happy. They told me that they wanted to continue to stay at the top. They really, really want to get this first win at a land. ये लोग जीत गए भाई, जीत गए. 7G बोल रहा हूँ ये. A7 जीत गया भाई tournament. 100% जीत गया.慢慢的往圈里面去走。 A7 are the champs, guys. UZI 大哥来了。 A7 are the champs. Remember 本赛季 UZI 淘汰23个呀。好家伙，第2名的花痴才7个，第3名也是7个，加一块再乘以2，差不多是他。 很夸张啊！在我们他是唯爱 UZI 这把枪的，情有独钟。看一下这一个方位，微笑是直接接住了枪神。啊，这边是 AG 选择主动出到防区来找听派打架，分到2波之后，2个队伍的攻守之势顶在前线，自己有些危险，往后撤。状态很差，这个时候微笑还在外围找一定的机会，但是近点的队友好像有点顶不住了，一瞬之间完完全全顶住了。 他们用一次快速的团战，扛下了红色流星猛烈的进攻。对于 AG 来说真的很伤，颗粒无收。可惜在另一边，作为头车探点也是看到了 K1 的脸上光倒之后，这个位置齐齐好要封烟。哎呀，可能 RSG 也是。整体来说，当前的这个东部分部可能更有机会到一个中部位置。 डॉक्यूमेंट्री का लिंक दो ना जी नहीं मिल रहा. लोको का ऐप खोलो, होम पेज में जाओ, ऊपर बैनर आएगा मेरा. बैनर पे क्लिक करो, डायरेक्ट खुल जाता है. 并且他还没有选择爬走，你知道为什么吗？因为输थे भाई,输कहीं नहीं थे भाई. 那就站在最高点啊。भाई आपका इंटरनेशनल में फेवरेट प्लेयर कौन है? पैराबॉय. 为队友们去探取最后的信息。 पैराबॉय किसका फेवरेट नहीं है भाई? 发光发热啊！是的，刚才最后也是被98K 给补掉。那这对于 RSG 来说，哎呀，又有点昨天海岛地图的这个味道。समझ आ रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. मेरे को सब समझ आ रहा है. 圈中心拿一些。 नोवा का POV देखो. ओवरऑल POV देखते हैं यार. एक ही टीम का POV देखें तो टूर्नामेंट देखने का क्या है?
लोगों का POV बोला देखो ऑर्डर के सामने से जा रहे ऑर्डर पे गिराएंगे क्या सना ना ऑर्डर पे स्लैम हो गए ऑर्डर में इनका क्लोज रेंज शॉट नॉक फिनिश एंटी रे एंटी रे ऑर्डर भाई सीधा नॉक फिनिश डाला सीधा नॉक फिनिश डेंजर है बे ऑर्डर ये ऑफिस अलग लेवल की गेम है भाई बहुत हार्ड है अरे बहुत ऑप्टिमाइज भी है और बहुत अलग भी है JD2112 थैंक यू NV 现在是来到了 4M की टीम पता है क्या अरे यार तू कैसी बातें कर रहा है 这个位置如果说能吃到4圈往后的圈型那去拿一些远距离的收分是非常非常 आपके पेरेंट्स भी हैदराबाद से है ऑफ कोर्स यार कैसी बातें कर रहे你想如果说要拿到4圈往后的一个圈型首先第2个阶段圈就要给到一个吸血是但是 कॉल्स ऑन पॉइंट होते हैं जिमी के सिला रहे अपने कौन सा समझ में आने वाला है भाई कॉल वो लोग क्या देने वाले कैसी बातें कर रहे हो यार हिंदी में थोड़ी कॉल्स देते भाई जिमी ये थोड़ी बोलेगा पैराबॉय चल स्लैम दे ऐसा थोड़ी बोलता है जिमी जिमी ये थोड़ी बोलेगा पैराबॉय को चल जहर बस दे ऐसा थोड़ी बोलता है जिमी कैसी बातें करते हो यार हिंदी में थोड़ी वो लोग कम्युनिकेट करते हैं तेलुगु आती है तो सदा ना तेलुगु SMG 这里是匆匆的赶回来啊，本身是快节奏的位置，但现在其实也要进入一个西部强侧点之间了。他们前方的目标有花园楼到黑森林，视角当中是刚刚我们说的中部一大片无效面积当中的麦田天霸的领域，将这里。और एक्शन की बताओ क्या बता रहा हूं 完全就是不慌不忙，往前去进圈，然后关键的一个2圈给到一个回切之后，刚好把他们切成了一个圈中心。一会儿等到阶段3啊，地图上面积也将定出来本场的大基调。中部麦田是一个范围，研究所野区是一个范围，再往上面歪城的主城区洋房的一个野区又是一个基调。这个圈型还是包括了整个歪城在内的，也有可能刷一个最后的城区圈嘛。那将会迎来一场非常非常混乱的场面了，城区圈呀打的就是极限。西翔是侧面发现了 Flower C。明显应该是 RSD 探点看到这个没有人，但是呢 K1 他们埋伏在哪？ डॉक्यूमेंट्री कहां पे भाई कृष्णा भाई लोको पे लोको ओरिजिनल्स K1 啊，我们发现 try streaming in Telugu once definitely 茂盛的地图，无论是雨林还是海岛，真的在前期自己的布置上有自己的研究的。很明显啊，经过了 मैं Valorant Among Us highlights कब डालोगे Among Us के डाला ना अभी एक ही बार तो खेला तो उसका हाईलाइट डाल दिया था Among Us का जब खेला उसी दिन डाल दिया अभी खेला ही नहीं मैं उसके बाद एंड वालो का हाईलाइट्स थोड़ा रैंक बैंक बढ़ने तो डालते फिर थोड़ा इंटेंस होता तो 5v5 होता ऐसे डील के साथ तब डालता हूं इसलिए वाले 5v5 में मजा नहीं आता स्लो हो गया था थोड़ा मजा आएगा तो डालूंगा हाईलाइट्स ऐसी चीज है ना कि लोगों को एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए लोग मजे करने चाहिए लोगों को हंसी आनी चाहिए तो वो हाईलाइट बोलते रहे ऐसा नॉर्मल गेम प्ले डाल दूंगा तो हाईलाइट में मजा नहीं है हाईलाइट में बकचोदी भी होनी चाहिए थोड़ी हंसी मजाक होनी चाहिए आज की हाईलाइट देखो आज की अगर तुम YouTube की हाईलाइट देखोगे ना तुमको बहुत हंसी आएगा मेरे को पर्सनली बहुत हंसी आया खुद बहुत हंसा था आज की YouTube हाईलाइट के बाद But it was too much fun 已经是比较好的一个 मेगल का क्या सीन भाई लड़की नहीं मिल रही भाई 是有点看圈的阶段，毕竟中部我们也是见证过的。 प्लीज Among Us डाला करो मजा आता है जी हाँ भाई Among Us तो मेरे को भी मजा आता है बट जैसे सेटल खेलेगी Among Us will definitely 把它的一个后期圈型啊，如果出现麦田圈，把它再提节奏扎点的这一个路径堵得比较死。 इसमें रिकॉइल भी ज्यादा होता है PUBG से यस इसमें रिकॉइल ज्यादा होता है एम्फेयर की आवाज क्यों ऐसे है क्योंकि ये गेम फॉर पीस है इट्स नॉट PUBG और अंडर कॉम्पिटिटिव सीन पीस रिप्लाई दे विल भाई मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया यार अब YouTube पे सर्च करो मिल जाएगा 刚才圈型向南部之后，现在又回 Love from West Bengal thank you 它既涵盖了歪城的南麦田，也包括了北麦田，这真的是在刚 Can by the center man 给出来无效面积最大的一种新耍法。这个圈型出现之后， बराबर सही बोल रहे हो 判断了。 以马路为中心， गेम जो मजा में 那究竟是往西切，还是说往东切，再或者说这个圈型最后往北切，切到城区呢？所以刚才我们分析了歪城几个核心点，在刚才东西北3个点分界线上的歪城警察局位置就显得无比的香了。那由于天霸的一波前期分采呢，汇合之后拿到了警察局，而侧面看到6将。 Language कौन सी China bro Chinese 不过他是倒在防区范围之内。 Have you watched any Malayalam film yes bro बहुत बार देखा but Malayalam film तेलुगु में देखा
近点上一颗火焰好像没有烧到。अरे उसके मुंह पे मोली निकली। 贴脸换枪。ओहो क्या खेला है भाई सुकी भाई। भाई अब मारा ना। मोली डाल दिया तुरंत गन निकाल के लो कर दिया मोली में चल गया। सुकी मैन。侧面 YZZ 也是顶住了，但对于他们来说，早就在身旁的民兵是实现关键的攻击。目前虽然来到阶段3，不在前期的范围之内，但对 NV 来说，这个身边去打弱侧是好机会。是 YZZ 扛起了陈 C 吗？还没有扶起来，迟迟没有扶人，先扛到一个安全的位置。苏皮这是有点急了呀，兄弟，我拖了这么久， कितना जल्दी स्मोक होता है पॉप करते 不如我给那个前面的盒子 అంటే సుందరానికి ఎలా ఉంది బ్రో చాలా బాగుంది అన్న 还真舔到了 మస్ట్ వాచ్ మూవీ వన్ టైం వాచ్ మూవీ చాలా ఫన్ ఉంది ఫ్యామిలీ మూవీ 最后是完成了一波面对河南 J Team 的防守反击，但对于他们来说还不能完全的松气，毕竟 NV क्यों नहीं है ये नहीं GTA अरे वो कर रहा हूं यार GTA का प्लान उनका गेम ही चला गया स्मूथ रहता है ये टू ऑप्टिमाइज मैन 应该能判断出来对方其实还是跟自己人数 आधे बंदे भाग गए मैच देख सिर्फ कास्टर के लिए देख रहे थे भाई 扑烟了还是准备攻 यार आपको चाइनीज आती है बताया नहीं क्या ब्रो 主力就是成 C आती है मेरे को 准备 चाइनीज 扛住 两边都是一个冲锋枪的对垒， 两支队伍的 जिमी मेरा बात होते रहता है ना 其实也 हम दोनों चाइनीज में बात करते हैं जिमी 但这个位置 NV 的阵型是不一样的。 जिमी बोलते रहता है सना ना 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 外围去架枪。 这样的话，一方面能非常好的保证自己的后身和侧身，但同样的， क्या लगता है मियां इंडिया क्या पूजी आएगा मैं तो चाहता हूं फर्स्ट ही आए यार कैसी बातें कर 而且由于1楼的烟雾弹啊， देखते क्या आता 没 है 有散尽，那散兵这个架枪位， हर कोई इधर चैट में जाएगा कि वो लोग फर्स्ट ही आए 视野是不多的。刚刚我们给了一个细节 ，Suki 专门舔了盒子，那这些软掩体投这是一点都不缺的。 那随着蓝圈慢慢逼近之后， कार्तिकेय लावून చూస్తున్నావా రే బ్రో 说要考虑是 చూడలే అన్న 架枪 कार्तिकेय 还是说贴到近点跟队友来一波配合。 到了一波需要动的时候了，但是我们看到1层的烟挡不了2层的视野 ，YZZ 也有机会看到 Paraboy 的方向。这个位置 Jimmy 的包里是没有杀伤性的投掷物的。 现在物资上的短缺也造成了 NV 在进攻路上的一个迟滞，蓝圈已经来到他们的身后，他们将成为先受到信号区衰减的一方。 那如果说两支队伍迟没有出手的话，下个圈型30秒，蓝圈就要刷新了。圈是真不等人。India esports का feature in India especially for the battle royale आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है भाई। 特别的容易。गेम आ जाए तो और अच्छा लगेगा भाई। 位置到侧面卡机会，苏 P 目前躲在墙后，他没有办法直接的探到。 विजय में चाइना की स्किन्स क्यों नहीं आते? अरे वो गेम फॉर पीस है दिस नॉट PUBG ब्रो PUBG रहता था तो PUBG में भी सेम स्किन्स रहते बट ये गेम फॉर पीस है इसमें अलग ही है पूरा गेम ही अलग है 看到苏 P 但居民埋伏已久，苏 P 用自己的枪躲过去，被 YZZ 加上乘 C 绕后。 चल पैरा बॉय 看到近点 ，King 倒在他的身边。 1v3 है भाई 好像 LGD 不会给他太多扶起队友的机会。 आज पैरा बॉय का 1v3 क्या लगता है? 是防着的，应该是知道。乘 C 提前枪。 क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? 身边有辆合金龙骨。 自己的身上没有太多的烟雾，好像哪怕这一波不准备打下去， survival खेलेगा of course खेलना चाहिए 先撤了。毕竟圈型已经刷新了呀，到了阶段4，伤害还是比较高的。哦 ，गेट की बोल रहे थे भाई 发现了他们的后坡，前方是一片非常平的麦田， 给到了阿杰非常好的视野，去架住这一处战场。 कौन सा गेम गेम फॉर पीस 对 LGD 来说，如果说想要 गेम का नाम ही वही 的地方就是 Y 城的城区，是只能往那个点位炸，因为整个圈中心的无效。बढ़िया पैरा भाई सर्वाइवल खेल लेगा 但又刚刚好在这 लोग स्टन बहुत यूज करते हैं हाँ बहुत स्टन यूज करते हैं स्टन वन करके मारते हैं 重镇那几个主要的拼图楼 चैलेंजेस खेल रही है ये अलग है यार वो अलग है 这一波 LGD 一个残边2人边是要做一个选择了。如果说你停在麦田，很有可能载具就被修掉，就动不了了。而且现在是才到炮楼处做一个观察，这里还并非在白圈之内。 怎么办呢？ ग्लोबल में कैसा मैनेज करते हैं करते हैं भाई मैनेज प्रैक्टिस करते हैं लोग 虽然刚才是陷入了绝境，但随着 LG भाई स्किन देखो बे 侧面既有载具，也有 ऐसे स्किन में तो 1 सेकंड में जॉर्जपुर से सीधा मिलिट्री पहुंच जाएगा भाई ऐसा स्किन रहेगा 之后完全就可以怎么样呢？顺着 LGD 的一个路线，跟着他们走。哎。 你看，他很聪明，跟着走。但是这里苏比做一波断后。Paraboy 是合金龙骨防御性可以调转车头，但好像离 JD 一家的路线不远了。但这个位置来到白边边缘之后 ，JD 一家也出枪，知道对方有人了，原地停车。哦，倒是非常极限的。
躲过了这一波风险。之前我们可以看到 NV 腾讯视频歪城也是有着不解之缘。Order 啊、Jimmy 啊等等队伍当中出现独狼的时候，总是会影响错来。但你就要看下个圈型会不会眷顾到歪城了。迎接一个比较极限的西北。哦，Lolita！哦，1v2 कर दिया。ST 的脸上两边都是一个互相倒人的状态。भाई 2 मार दिए। 只剩下弟弟一个。खत्म। 又是刁文间的跳跃。RSG भाई。下了武汉 RSG， 这一波真的也是。3 knock कर दिए थे बे। 3人倒地的情况下，भाई 1v1 था एंड में। 有人来劝架吧。这个时候侧面四面八方，कुछ लेगा，只要待过一个就是团灭。ऐसा स्किन रहेगा तो कौन नहीं कुछ लेगा。他也不敢。但另一波 OnlyS 来了。अरे जिधर फाइट होता है तो टीम आ जाती है भाई मजे लेना।而且我们看一看这一个， अरे बाप रे बाप， 把完全反打掉的人数分数。另一边跟 LGDYZZ 又单败。火焰，这个火焰的伤害止得住吗？ पब्लिक ऐसे लड़कियां चिल्ला रही है ना पुलिस को। 撤退是可以打压， पर boy 知道对方是一个残血的状态。这个厕所的距离是有一些近的 ，Para boy 他这打药的时间， मार देगा Para boy मार देगा Para boy मार देगा 暴露他的身位， Para boy मार देगा 打起来半血打 Para boy 半 मार 血 देगा 绕到侧面 ，YZZ 悬崖上依然占有 Para boy， 情况不妙，跳跃之后伤害没打满，打了一枪头，这个时候状态都差不多，一线之隔就是。अरे यार 打破这个 एंटी 哦，这一波真疯的 Para boy 是先换倒一人之后 ，YZZ 顶到了最后呢 ，NV 腾讯视频。हमारे लैंड पे क्यों नहीं होता यार ऐसा？ भाई अपने इंडिया के लैंड में ऐसा करो यार कुछ। 73的分数。但对于 LGD 来说，目前只剩下 YZZ 一 ऐसा 人的 लड़कियां क्यों 情 नहीं 况 आती यार 下 सपोर्ट 呢， करने। 还是说我个人建议 बंदे का कॉन्फिडेंस ऐसे 3 गुना 10 गुना हो जाए भाई। 拿下合适的排名分，毕竟已经到了。 बैकग्राउंड में चिल्ला रहे मेरे पैरा बॉय मार दे भाई ऐसे क्लच कर देगा। 东南角一些啊，圈中心至少有一些凹坑啊。对于一个独狼来说，够用。到了这样的一个圈型，你从城区想要出队拿淘汰分，几乎不可能。是的，那赶快看看刚才队友啊，还有 Para boy 剩下的一些载具，能不能供自己所用？是的。再看另一边， वाईफाई की स्पीड दिखा दो ब्रो। 广州 TC वाईफाई की स्पीड देखना अलग डिमांड है भाई की पूरी करते भाई की डिमांड अलग है गाइस रुक जाओ भाई की डिमांड पूरी करते रुको सर्वर फाइंड होंगे उसके बाद करते। अरे बंदर भाई कैसे हो? The performance that they've had is just been insane. But we are in this format here with 48 players. It's obviously a size of Karrakin, 2x2. Karrakin's a little bit smaller best player water around. But the question is, how do these guys approach it? How do these guys play this one out? It's really interesting to see. 400 आता है अभी स्ट्रीम कर रहा हूं 350 आ रहा है. And if they're able to 350 download 350 upload. Yeah, I mean, I'm intrigued to see how some of the other teams. Let's go, guys. Team India in the chat talking about Bigatron and if it's maybe time to get rid of the twins Lexi and Saxi. No, I feel like that. Bigatron without the twins would not be Bigatron. And I'm intrigued to see how they're going to be playing. नहीं full 2x पूरा delay हटा दिया. 7. पूरा delay हटा दिया. They ended up getting. अरे वो लड़के हैं मियां अरे लड़की थी रे वो क्या बात कर रहा है? That is a lot of money just for one game. So Bigatron, are they gonna be maybe changing their strategies at some point, trying to go after that money? We are seeing where some of these teams are going to be landing. I'm gonna be. But Insta पे reply दे दिया करो ऐसी डेटिंग ओके ब्रदर. तुम्हारा favorite map कौन सा है? मेरा favorite map है. Hot drops. You can see Alpha 7. D-2. Full north rotation. By state. मजाक कर रहा हूँ मेरा फेवरेट मैप भाई मेरा मार नहीं रैंगल नहीं बिग एंडी यार तीनों ही पसंद यार to just loot up power plant. A great place to go to actually either मराठी मूवी देखी है ब्रदर मराठी मूवी एक देखी थी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को लव स्टोरी have the best of luck finding some loot. I like to go crab crash because there's where I'm really channeling my inner sucker because there's good amount of loot. We had a good ending close to it. And yeah, I really love that. It's just center good rotations. The roads are close to it. Yeah, next circle's gonna pop, and it's not gonna matter too much. Literally, the entirety of the circle is almost in here with the first one. The guys in the south obviously. Yeah, and I love that I'm hearing the crowd right now. They're getting hyped. Great performance in that last match, and guess what? Team Falcons is gonna be getting the first elimination. And getting that first elimination reward. भाई ये तो सीधा 1,60,000 रुपए अकाउंट में. Team Falcons, that's gonna make him really happy. वो कहाँ चिल्ला रहे हैं? In third place for the overall, and they have been racking up a lot of rewards.
Dead Ice I love hearing that crowd, and I love that everybody's currently watching PNWI together, and you at home can watch PMWI together in game. BGMI की stream कब? Friends to win. अबे अभी 1-2 दिन पहले करी थी। And while you're at it, जरा ये PMWI का खत्म हो उसके बाद रेगुलर करेंगे अपन। और फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गया ना थोड़ा आज इसके लिए स्ट्रीम नहीं कर पाया। Crates if you play PUBG Mobile during PMWI. मराठी आती है क्या भाई? कैसा क्या बाबा? I definitely want one. Yeah, for sure. The screens are absolutely nuts here. As you see, our $60,000 so far, $60,000 for Alpha 7, just crazy. I'm on Kia Falcons 32-30 and 48 lakh rupees. It's been very top heavy so far. You can definitely tell. But 48 lakh rupees ही दिए भाई. It's kind of crazy to see 48 lakh rupees to get this much. Yeah, let's see if they're able to close it out for sure for the rest of the week. We are on day 2. We are playing a total of 3 days, 18 games total. And once we're done with our game of the day, the next one after this one, of course, we are going to be halfway through. We're going to have a really good idea of how the situation is. And, you know, the guys on desk, they're quick to just announce, all right, it's the PMW After Party Showdown. I think, honestly, once we go into day 3, the other team's going to be super aware of that. Alpha 7 needs to be stopped. And once they pop up the elimination tracker, they are going to be kind of hunted and focused on a little bit. Otherwise, there's just going to be those guys winning, right? Yeah, I mean, Alpha 7 currently 37 points with the lead. It's different between first place and second place. Yeah. But I think that's achievable for a lot of those teams. They could try to push for that, right? Maybe not in just one game, but they might be able to do it within 2 games. And if Alpha 7 doesn't have a bad match, which we have seen over and over again in PUBG Mobile, yeah, you might be very dominant on the first day. You might be very dominant at the start of day 2. But if you don't continue on that consistency, you can fall off very, very fast. Alpha 7, though, it's not looking to be like that. I'm pretty sure they are looking at that gap and wanting to close it down. Making sure to back off, and I'm excited to see. Right away. Top does have that shotgun on his back. Smart man, especially with what he was able to achieve yesterday during that show match. Yeah, for sure. All guys really close to each other. पहली बार सुन रहा हूँ ये कौन सी लैंग्वेज है? जो आप नशे करते हो ना? Question is the other guys going to come? वो नशे आजकल के बच्चों को करा लॉकडाउन की मजा आ जाएगा. I think he's just going to be at least बैठ के ऐसे से तो Team Baigan 37 points. Team Baigan, big shout out to you. It's crazy considering you get 10 points for a win and 1 point per 60 के USD ब्राजील में 3.5 लाख ही होते हैं. अरे फिर क्या फायदा बे? They're looking at what the situation could be for that one here. तो बोलो A7 को इंडिया में ट्रांसफर कर दे पैसे. यहाँ से अपन 3.5 लाख रुपए दे देंगे. बाकी के पैसे अपन रख लेंगे. क्या बोलते हो? They're going to be getting down so many. S2G being able to knock 3 players now. It's only Alan from 7Cs. Can he survive? It's going to be a very tough one. S2G playing super, super aggressive right now. I don't think Alan has any of the shotguns. This is going to be too much. S2G just coming in and destroying them. 7Cs is able to knock down Ray C, but not able to confirm that elimination. Great push there by S2G, and that's what we want in the chat. See, especially more maps like this. If you are going to be taken into a fight, make sure you fully go for it and finish it quickly, because guess what? Team Falcons was close by, and if that fight would have dragged on a little bit longer, I feel like Team Falcons might have decided to actually third party that. Instead, Team Falcons decided to back up and not try to third party. Yeah, I like